फोल्डर्स हेलो करी गया। हेलो हेलो। एक सेकंड मास्टर तेरे को भेजने दे ड्राइव। तेरे को देखना होगा, मैंने वीडियो में बनाया ठीक है ना, तो उसमें से जो तेरे को सही लगे उसको हेलो सुजीन, हेलो स्पेड, हेलो अभिषेक। शेयर करो ऐसे। हाँ हाँ मास्टर देखे, मैंने भेजा लिंक, काम कर रहा है, डाउनलोड करके दे। हंसना मत साले वीडियो पे। एक्टिंग करनी पड़ती है भाई चेहरे बनाने की, बड़ा क्रिंज लगता है भयंकर। एक सेकंड कैंसिल कंटेंट्स कर दो जरा ब्रो। मेरे पास अभी 30 विसेस हैं, अगर मैं पूरे मैप की एवरेज 70% एक्सप्लोर कर देता ही विद वेल्किन तो क्या आइडिया है कितने प्राइमर्स हो जाएंगे? देखो स्पीड सच में नहीं पता, सच बोलूंगा। हेलो तितली, सबको 150 पुल में E2S1 मिल रही है ऐसा क्या? सबका पता नहीं यार, मेरे को तो मिल गया। हेलो शाश्वत, स्क्रीन ब्राइटनेस ज्यादा फील ना होता मॉनिटर का? नहीं, अरे वो खोल रखा ना, बट भेद डायरेक्ट कुछ क्लिक करके वीडियो से फोटो उठाने से क्वालिटी डाउन होता है। अबे फोटो क्लिक बताएं बड़ा नाटक हो जाएगा पता है। फोटो क्लिक करने के लिए मुझे दूसरा हाथ उधर रखना होगा और फिर वो इट्स, अगर मैं सुन रहा है, अरे उसी में से उठा ले, वैसे भी वो छोटा ही करना पड़ता है। ट्राई करके देख, ट्राई कर देख कैसा बनता है वो। अच्छा लगे तो यूज करना, ना लगे तो मत यूज करना। वो ऑनलाइन ही नहीं है बट I got my mouse delivered today and it lightweight 50 GM। उफ, अरे भाई कौन सा माउस लिया था? स्टोरी कर लिया? नहीं अभी कर लूंगा, स्टोरी अभी करूंगा। ये देख रहे हो गेंसिन की वाइट वाइट स्ट्रिंग लोडिंग वाली, भाई पूरा हाइलोजन बल्ब है बैंक करके हैं।
फुल वीडियो में ना सवेरे में पड़ेगी, सवेरे में। मास्टर को इसीलिए तो थंबनेल के लिए तो भेज रहा सामान। बस करना, थोड़ी मेहनत बचाने के लिए चैट इमेज कट कर लूंगा। अब हैं चेयर इमेज कट कर लूंगा। ओके, और ट्राई करके देख कैसी लगेगी। वियर्ड नहीं लगेगी तो फिर जैसे तू बना वैसे बना लियो। ट्राई करके देख बस। हेलो जेन। चेयर के साथ वो समझ गया मैं, चेयर के साथ। यार तो कैंसिल में काश आईडी पास सेव होता, कितनी आसानी होती है करना काम। स्कूल मास्टर एम अरे तुम MM7 लिया? मैं भी ये माउस, जब मैं माउस लेने गया था ना, तब मैं भी यही लेने सोच रहा था कूलर मास्टर का, बट मेरे को उस वक्त आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। एक मिनट, एक्सक्लेमेशन HSR सॉरी, मस्त है, बच के रही स्पॉइलर से। मैं अभी कर लूंगा, प्लीज कॉल करने को यार। ले लो भाई अपने, एक मेरे को दे दो, और प्लेट रख देना मेरे पे, प्लेट भी लेते हैं ना। अभी न्यू जो चेंज अटैक 32 के DPI पे। ओबे गेम्स के शेयर नहीं करोगे? अरे अच्छा सा, अरे गेंसिन है ना, गेंसिन की बस कंडेंस करके लॉग आउट कर रहा हूँ ना, गेंसिन कंडेंस कर रहा हूँ बस। और मैं कुछ कर रहा था ना साइड में। अच्छा मैं कंडेंस करके बंद कर रहा हूँ, HSR खोल रहा हूँ। टाइम फॉर द स्टोरी बेबी। डोमेन डोर की साउंड आई? हाँ गलती से मैंने डोमेन डोर में घुस गया था। Genshin off, HSR open. Yeah, baby. दो मॉनिटर क्या फायदा है? दो मॉनिटर फायदा ये कि एक साइड पे तुम कुछ भी देखने के लिए लगा सकते हो और मेन मॉनिटर पे गेम खेल सकते हो। मैं लिटरली यही करता हूँ, साइड में किसी की स्ट्रीम लगाते तो देखता रहता हूँ, ठीक है, और मैं मॉनिटर अपना गेम खेलता रहता हूँ।
आंखें तो एक ही है, एक पर ही फोकस करोगे ना। हाँ बट बैकग्राउंड सुनते रहोगे ना कि क्या बकचोदी कर रहा बंदा। ये अपडेट आया एक और, ये साल वाले बहुत अपडेट देते हैं भाई। नाइस आइडिया। फेस कैम ऑफ, अच्छा फेस कैम ऑफ है, ओह सॉरी। अरे फेस कैम तब से ऑफ है तो, अच्छा नहीं नहीं अभी फुल स्क्रीन था ना, मैं वो रिकॉर्ड अभी मास्टर को भेज रहा था ना तो उसके लिए ऑफ किया था, भूल गया था ऑन करना। आफ्टर प्लेइंग विद द कंट्रोल आई रियलाइज्ड गेंशिन में स्क्रॉल बटन से कैरेक्टर स्विच होता है, होता है, मेरे को नहीं पता था एक्चुअली में होता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक सेकंड आया, मैं पानी बोतल लेके। Hello Kosal, what are you reading? What am I reading? I'm reading your chat. What do you mean? मॉनिटर, वर्टिकल मॉनिटर कौन सा है? पर मैं मेन मॉनिटर तो अपना सेम ही है। मंदिर में सीटी क्लोज हो गई और प्ले स्टोर पर रजिस्टर करने का ऑप्शन आ गया है। वो तो कब का हो गया, वो तो कब का हो चुका है, तो कब का हो गया। फोर लाइनर क्रेट रेट, इंटरेस्टिंग। Hello, yes, sir. What? Oh. Was that it? Nah, I couldn't do that. Here, it's thunder. Show no mercy. Receive divinity. The dead return. All will be swept away by the wind. Conflict is pitiless. Nothing major. Bloom. Can you find the answer?
Oh, created with speed. Hello, Alec. Existence is unity. इसमें विजन्स का कैसे है ना, इसमें विजन्स नहीं होता है, कैरेक्टर्स पाथ फॉलो करते हैं। Receive divinity. दूसरा गेम है, दूसरी स्टोरी और वो सब मैकेनिक्स सब डिफरेंस होता है। Enjoying yourself? Can you find the answer? Conflict is pitiless. टू के स्टैंड Show no mercy. वाई क्या वो Feeling sticky? Here is thunder. स्टैंड उतना महंगा नहीं आता वैसे तो, Will be swept away बट by the wind. आई मीन मैंने डबल मॉनिटर लिया था, वो 2,000-3,000 पड़ा है भयंकर ये। Conflict is pitiless. Show no mercy. सिंगल मॉनिटर काफी सस्ता पड़ जाएगा। Nothing major. डिस्कॉर्ड वाईटी नोट ही नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया डिस्कॉर्ड, पता है? Feeling sticky? Can you find नहीं दिया है, Here is thunder. दिया तो है। बारवां निकला डिस्कॉर्ड। existence is unity? Conflict is pitiless. ये कस्ट एक्टिव आईडी है क्या? हाँ, स्पार्कल एक्टिव आईडी में देगा। You find the answer? एक्टिव आईडी में रेजन यूज करके जाऊंगा मैंने अकाउंट में। Feeling sticky? Here is thunder. Show no mercy. Conflict is pitiless. मिल गया आकरण, नॉइस। Swept away by the wind. सिंगल मॉनिटर लूंगा, सेकंड मॉनिटर तो 8 मंथ तक देखूंगा। स्टार्टर से सिंगल मॉनिटर बहुत है। Feeling sticky? डू एट नाइट मेरे को टाइम नहीं मिला, पता है, लेकिन डू एट नाइट अब इसका गेम प्ले कुछ भी देखने के लिए यार, मेरे को देखना था यार। गेम अच्छा लगा मुझे देखने में, ट्रेलर देख के। Receive divinity. तू क्या 256 हार्ट 256 हार्ट कौन सा मॉनिटर ले रहा है रे? Eternal. Conflict is pitiless. अब तो पे से क्या यूज करूं? गुड नाइट स्लीप वेल। एकदम खराब बिल्ड पर अभी Acheron इजी 1 लाख दे रही है, 1 लाख से ज्यादा देनी चाहिए। 1 लाख ऑन ऑल्ट इज वेरी लो कुशल। शी शुड बी डूइंग, अगर तुम्हारी Acheron ऑल्ट में 2 से 3 लाख नहीं मार रही है ऑन F2P बिल्ड, शी इज वीक। सेकंड बेस्ट एलसी कौन सा Acheron का? गुड नाइट स्लीप वेल S5। गुड नाइट स्लीप वेल S5 उसकी सेकंड बेस्ट स्लॉट है। स्लीप वेल के अलावा कोई और चलेगा? गुड नाइट स्लीप वेल के बाद वेल्ट की एलसी है, बट गुड नाइट स्लीप वेल बेस्ट है स्टिल, इट्स सेकंड बेस्ट है वो आफ्टर हर सिग्नेचर। काफका एलसी नहीं काम करो कुछ में। This is useless.
ना ये बेकार है, बेकार है ये। गुड नाइट, स्लीप वेल। बेस्ट LC over any LC after a signature is this, बस। आपका एक्सप्लोर कैसे लगे अभी तक? मेरे को तो बहुत मस्त लगे भाई। आई एम हैविंग अ फन, आई एम हैविंग फन, वेरी फन। यहाँ तो 2K 160 हर्ट्ज वाला ले रहा है, 2K में 56 हर्ट्ज आता नहीं। देख ले, यहाँ तो पता नहीं मोटर कौन सा ले रहा है। Acheron जा रहा मैं फुल। ओके, Acheron एक पिंदी से एनिमी को बुली कर रही है। E2S1 Acheron 150 पुल जिंगलो का सामान लगता क्या उससे बेटर। LG का अल्ट्रा गियर 2K 165 हर्ट्ज वाला। ओके ओके। Acheron टीम प्लीज ये यूज कर सकते जो मैं यूज कर रहा हूँ। क्या TM देख रहा हूँ। Hmm. 165 हर्ट्ज था बे, 256 हर्ट्ज था। आपका सबसे बेस्ट कैरेक्टर कौन है होंकाई में? मेरा बेस्ट बिल्ड जिंगलू है। पहला सिल्वर वुल्फ, दोनों यूज करो ना, बट आई थिंक आई वुड चूज सिल्वर वुल्फ ओवर पहला। आई विल टेल यू व्हाई, देयर इज अ रीजन। आपका अकाउंट बिल्ड दिखाओ, टाइप एक्सक्लेमेशन बिल्ड HSR, एक्सक्लेमेशन बिना स्पेस दिए बिल्ड HSR टाइप कर दो, बिल्ड देख लोगे। मिल गया Acheron मिल गई, पॉग आए तो नाइस। लाइटनिंग स्फीयर अटैक, जो तुम्हारे पास अच्छा हो वो यूज कर सकते हो, कुछ वो फर्क नहीं पड़ता। जो तुम्हारे पास अच्छा हो लाइटनिंग और वो यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं तेरा हाथ दिखाया। ओके, में रेडन जैसा डैमेज कौन देता है? अभी तो Acheron ही है रेडन। अल्ट्रा न्यूक। अबे पता है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था गेम प्ले के लिए Acheron।
मैं रिकॉर्ड किया, बता कितने मिनट की रिकॉर्डिंग थी? 1.5 से 2 मिनट की रिकॉर्डिंग। इतनी स्पीड से Acheron ने एक चेंबर क्लियर किया है फर्स्ट हाफ, एक साइकिल एमओसी का 1.5 से 2 मिनट में। मैं लाइक यार मैं 1.5 से 2 मिनट की वीडियो क्या डालूं? सही में मैं रिकॉर्ड करने में था, 1.5 से 2 मिनट की वीडियो कौन डालेगा फिर? के देख के जलन हो रही था मुझे, अभी तक मिली नहीं। एक तो हर बार 50 लूज कर देता, अर्ली भी नहीं देता, इवन सॉफ्ट पीटी भी 61 पीटी हो गई है। 61 हो जाएगा रे। स्टोरापुर के नए स्टोरी करने जा रहा हूँ। अरे कोई वो टाइप करो रे, स्टोरी के नो स्टोरी वाला स्पॉइलर वाला डालो यार मैसेज। जिंगल पार्क करीब है। Acheron with a max investment is ASUS tier DPS easily. Acheron with max investment is ASUS tier DPS easily. Same in by better Lune and Jinglu level पे ही है। Replace pin message. Right, आओ भाई, आओ करा जाए स्टोरी। Acheron का LC काफी इंपॉर्टेंट है। यस, Acheron का LC इज मैसिव डैमेज इंक्रीज, डैमेज इंक्रीज नहीं, मैसिव Every moment. makes a massive difference how the character plays out. Trust me. How does it feel to be in business with Aventurine? I bet आज से भी you're not निकालना है, used उसके to लिए it. कहाँ से लाऊंगा फंड्स? और ये बाप रे बाप। That's just his फार्म style. करना पड़ेगा All or मुस्तार। nothing is his mantra. पैच एंड होने It's तक always तुम्हें 60-70 पुल possible मिलेंगे। to his clients while ठीक है, egging पैच them एंड on होने तक to तुम्हें undertake some 60-70 पुल मिलेंगे। dangerous assignment with अब वो him. तुम्हें फार्म करने होंगे, But तो तुम everyone has जा their सकते हो merits, लाइट कॉइन मास्टर, so I won't comment बट वही कि तुम्हें फार्म करना होगा। But अब अगर तो और तेरे को तो 60-70 F2Ps को मिलेगा, तू तो पास पे रहेगा। He's always closed all his cases without a hitch and basically never अगर तू lost a Acheron battle. 50-50 जीत गया तो लाइट कॉइन आराम से हिट कर Which is लेगा। why, on the issue of retaking Penacony, I'm watching with keen interest. भाई Acheron मैंने F2P में विदाउट सिग्नेचर LC बिल्ड किया, 3K अटैक एंड 168 ठीक है ना? हाँ ठीक है, दोनों कंफर्म है। अरे तब क्या, फिर तो तेरी आराम से निकल जाएगी मास्टर, बस तेरे को फार्म करना पड़ेगा, Of course. It's business after all. आराम से निकल जाएगी। काफका कैसी है Acheron टीम में? काफका इज फाइन, ब्लैक स्वान बेटर है फॉर Acheron टीम्स। I don't have much info on them either. काफका यूज कर सकते हो, बट वो ये कि काफका स्किल पॉइंट हंग्री है। यू विल टू यूटिलाइज काफका, यू नीड टू स्पैम हर स्किल। अगर तुम फूजन यूज कर रहे हो, काफका यूज कर रहे हो, हैं सिल्वर वुल्फ या पहला डाल रहे हो, तो टीम काफी स्किल पॉइंट हंग्री हो जाएगी एंड यू विल रन इनटू द प्रॉब्लम ऑफ स्किल पॉइंट्स। We're carrying out our captain's orders. What do you want? We made a mistake last time, and we're working hard to rectify it now. We don't have time for anything else. Surveilling the IPC executive Topaz, ensuring that she stays put at the Reverie Hotel during her time 65 on पेटी पे Penacony. बाइलो एलसी मिला। उफ We've got the right one this time. अरे पेटी तो कर दूंगा एवेंचरिंग के लिए, बट अब मुश्किल लग रहा है, 4 बार 50-50 जीत गया हो। ओह It's you again. Back for more trouble? We're not afraid of you this time. Well, spit it out. Stop bothering us if you've nothing important. So you know each other. Acheron कल से निकालो कि जिंगलू के लिए सेव करो, जिंगलू के लिए सेव कर लो। Acheron पे F2P LC दे दो, गुड नाइट स्लीप वेल। ये तो सवाल बहुत, इस सवाल का सवाल बहुत आसान है। जिंगलू ओवर हर एलसी इजीली। That's right.
डैगर स्पिल का मैं भाई आज सबकी मोस्टली पीपल की 50 जीता हूँ भाई, मोस्टली। ठीक है, बस अनमोल की लूज किया, अपने पे लूज किया, बस सबकी जीता हूँ, सबकी। आज एकदम समझ लो 90% विन रेट, 90% विन रेट था मेरा। Before he returned from Dream's Edge. What murder? You'd better stop spouting nonsense. Yeah, that's right. We have nothing to report. Please leave. Looks like they're not going to cooperate. But they did at least tell us that the captain is at Dream's Edge. Why don't we just look for the security officer then? It's probably Gallagher, the one she mentioned, right? एक सेकंड। तुम लोग जनरल में कितना कचर कचर करते हो बे? स्वागर मुझसे बोला तेरे जनरल में कितना लौंडे बतियाते हैं, बाप रे बाप। भाई to present. Okay. Hello buddy, what's up? मन तो हो रहा E2 ट्रैक लो। क्रेडिट कार्ड अपने आप बाहर आ रहा है। I bet they're stumped by the case as well. क्रेडिट Gallagher. टाइम टू स्वाइप। Gallagher. तो समझ जाओ तो समझा देना। ओके। अरे गैलगर सस्ता ब्लूरेन। The Bloodhound family is running an investigation up तो ahead. बताया एक्रोन कैसे काफी अच्छी है। स्टोरी स्पॉयलर्स भी हैं, स्पॉइलर टैग जनरल थोड़ा कम देखो। अरे मैंने वो मैंने खोलता, कोई स्पॉइलर डालता है ना वैसे लिख के तो मैं खोलता हूँ। The gray-haired one. How much trouble have you stirred up exactly on Penacony? तो सर्वर डेड नहीं, आप अलग ही हो। ठीक है भाई। Not possible. It was you the last time yelling about some clockwork friendship while beating me up with that silver-haired girl. I'm not letting you get by this time. Please leave, or I'll have to get on my knees and Hello beg. Beast, what's up? Huh? What kind of heinous crime have you committed now? Hold on, sir. We have documents authorized by the family that would aid your investigation. If it wouldn't trouble you, could we see this Mr. Gallagher? Who exactly is this Gallagher? साला गैलगर फेक बन के घूम रहा है। There's been a few people mentioning this name. गैलगर फेक ब्लडहाउंड का मेंबर बन के घूम रहा है, कुछ अलग ही खिचड़ी पका रहा है हरामी। He didn't send you all ये here? म्यूजिक मुझे साइड करता है। It was the security officer who dispatched us. That's all I can divulge. He'll do. He's the one we've been looking for. Sorry, no can do. The boss said that since it's a matter of the family's reputation, no one's allowed through. Everyone, please leave. There's really no need for us to make things difficult for each other, right? We're really sorry for troubling you. Let's think of another way. Another way. That's it! Didn't they say something about that? What was it? Clockwork? That got this guy to change his mind? Can you perform it again? That, Leo. But I can't abuse it for evil doings. Why not? All right. Sorry, no can do.
The boss said that since it's a matter of the family's reputation, no one's allowed through. Everyone, please leave. There's really no need for us to make things difficult for each other, right? Happy. Let me see what time it is now. लाइक अगर मैं पुल करूं तो रिग्रेट नहीं करूंगा डिपेंड करता है Acheron के लिए तो मैं थोड़ा सेटअप चाहिए पहला होनी चाहिए बिल्ड रेडी Acheron के साथ यूज होने के लिए और एक और निहिलिटी अब वो सिल्वर वुल्फ ब्लैक स्वान या फिर गनफन इनमें से कोई एक हो सकता है This clockwork trick of yours, it's kinda dangerous. At least he won't be getting in our way again. Let's go find that Gallagher and ask him the intricacies of the case. I was wondering what all the commotion was. Huh. Oh, it's you guys. ओके तो पहला बिल्ड करनी मुझे नोटेड हाँ और एक और निहिलिटी दो निहिलिटी यूज करती है इधर Acheron एक नहीं Hello, Mr. Gallagher, sir. एक निहिलिटी यूज कर सकते हो बट उसके लिए स्पार्कल चाहिए It sounds like you were expecting us. बट वो होगी नहीं होगी I don't know. Miss Himiko, you're too polite. There's no need to call me sir. Mr. Gallagher, you even know my name. Of course I do. You folks are from the legendary Astral Express and honorable guests of the Watchmaker. I had an encounter with this lady in the golden hour. I remember that little silver-haired girl was there too. Oh no, साले ने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया. Sorry for what happened to that kid. This is also the reason why we. Big team is better. पहला silver will black sun और Storm black sun. पहला वाला black sun. मैं personally बोलूँ तो मैं black sun पहला ज़्यादा prefer कर रहा हूँ. Black sun पहला मेरे को ज़्यादा पसंद आई. Because उसमें black sun damage भी देती है अच्छा खासा. और Acheron के लिए भी काम आती है. Defense trade करती है वो. चाहे कौन सा path है वैसे destruction है. What's wrong with the family? It's nothing. मैं तो black sun और पहला वाली टीम ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ use करना. No matter how much one resists the beautiful dream, when the time comes, they too will find it hard to let go. एक सब DPS टीम में वो काफी अच्छा होता है ना. अब पहला दोनों कोई buff कर सकती है. Little kids and inebriated fools. Mr. Gallagher. बट जो भी मैंने Acheron के साथ वो चल रहा है रोहान में. I'm not. He's strong with रोहान में. Very strong. Come with me. रोहान में अपने ऑल्ट से डीबफ भी डालती है. ठीक है. रोहान में अपने ऑल्ट से डीबफ डालती है जब पहली बार कोई भी एनिमी हिट होता है तो एक डीबफ अप्लाई होता है एनिमी पे फर्स्ट हिट में. Even after that chilling tragedy, other than the family of the Harmony, it's hard to imagine any other power in the universe that could sustain a building of such magnitude. The family itself is a huge, perfect building. Like a living idol. Each member of the family sees themselves. फ्लावर डिवर्ट काउंट होता है मेरे को नहीं पता था. हाँ वो डीबफ है. वो जो एनिमी के ऊपर फ्लावर बन के आता है वो डीबफ है. बट वो एक ही बार आता है ना. वो पहले Acheron रोहान में ऑल्ट करने के बाद पहले हिट में ही आता ना. तो वैसा है. और दिस नियर कैरेक्टर दिस इज bonkers insane. SS कैरेक्टर है. Has persisted for so long. But the human body has its I mean limits. Raiden में है. So does the divines. Honkai की फेवरेट चाइल्ड. Of course OP तो रखेंगे उसको. भाई for E2S1 is 161 210 occur sort in no it's very good. Just use the new Plana ornament. You get 12 here. You say that, Miss Acheron. ब्रो मैंने भी SR स्टार्ट किया. मजा आ रहा है पर गेम कॉम्प्लिकेटेड ना. गेम इजी है बस अभी तुम शुरू किया ना तो तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड है. धीरे धीरे समझ जाओगे. मजाक है गेम प्रीटी मच ये भी. अच्छा सर कोई हार्ड गेम नहीं है. स्टार्टिंग में हार्ड लगती है बट आई मीन फिर बाद में मजाक ही बन जाता है गेम. You just press auto button
everything got bombed. As people immerse their souls बॉम्ब है जहाँ पर थोड़ा बहुत स्ट्रगल होता है, बट वो भी काफी बहुत बोरिंग लग सकता है. and only ease and pleasure prevail, they draw closer and closer to necrosis. Necro? Regardless Necro of नहीं है चढ़ना. perceived bliss, death looms. आम जैसा आँख इसका नहीं, वो आँख काफी लोअर इम्पोर्टेंट है. जिस तरह से उसको डिजाइन जो है ना, Acheron बहुत लोअर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है. उसका पाथ जो है वो जानबूझ के वैसे रखा है. इसके किट में कुछ चीजें हैं वो जानबूझ के रखी गई हैं क्योंकि वो स्टोरी के अकॉर्डिंग है. इतनी ज्यादा स्टोरी ओरिएंटेड वर्क बनाया है इसको. बट इज अटैक और लाइटनिंग डैमेज बेटर? दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो. बोथ आर फाइन. Both are fine. You can use attack if you have lightning. You can use it. दोनों अच्छे हैं. Same मिल जाएगा pretty much. Depend करता है सिनेरियो पे कौन सा बफर यूज कर रहे हो, तो हो सकता है अटैक बेटर हो जाए लाइटनिंग से, बट दोनों ठीक है. बताने के कन्वर्सन होने के बाद वो सेम है. गेंशिन वाला सेम कॉपी पेस्ट, बस यहाँ पर ऑप्टिमाइज पाथ नहीं है. लाइट कॉन बैनर पे 50-50 नहीं होता है. 75-25 का रेशियो होता है. 75% विन रेट होता है. It's only when this sword is unsheathed that those hazy memories start to become clearer. Take your time. Acheron ने अपना दिमाग वो लूज कर दिया. क्या मेमोरीज? I vividly remember everything that occurred on Penacony. Ask away. The moment of daybreak. I've heard that's where the Dawn Factory, which processes the foundation of the dreamscape, is located. अगर ये Acheron लौंडा होती तो इतनी हाइप ना करते. कुमार से अच्छी कैरेक्टर है बट जिंगलू से बेटर नहीं. अरे सेम ही है, मैं सही बता रहा हूँ. मैं Acheron यूज कर लिया E2S1 और मैं कह सकता हूँ कि सेम लेवल पे है विद मैक्स इन्वेस्टमेंट. ठीक है. Experiencing the bizarre and motley dreamscape is the best. For F2P, but for new player, Jinglu is better. The perfect time to indulge in beautiful dreams. That's the thing. Her greatest wish was to one day move to the golden hour and see the magnificent garments. अभी तक मैंने E2S1 नहीं किया और वो ये 4-5 लाख के ऑल्ट मार रही है. For certain reasons, her wish was difficult to fulfill. But I managed to bring her a garment. हाँ? Gilded Hour. It's said to be Penacony's currency center. Yes. It is a fortress-like financial. क्या सकते हो? हाँ, वही कह रहा हूँ ना. Depend करता है, but overall damage wise same level है. The Alfalfa family are there to keep it running. मेरे E2S1 जिंगलू कह रही है कि अरे भाई अगर 75% विन रेट और 2 टाइम वेपन पर लूज कर गया हूँ. मैं खुद लूज किया हूँ 2 बार. मैं खुद लूज किया हूँ भाई. ड्यूरिंग आपका फर्स्ट रन एंड नाउ आई पुल्ड फॉर 5 मैं खुद 2 बार लूज कर चुका हूँ भाई. Crowds of people hurrying like the wind through the jungle of steel, only to deposit the alfalfa credits that they'd earned into the bank's vault. I don't know if they would open the vault door, but before I left, I witnessed a well-dressed Pepeshi person plummet from the sky, while those around him continued on their way, unfazed. मेरा भाई E2 हो गई. What the fuck? हाँ भाई, वो तो मैं पहले बोला था मैं E2S1 करूँगा Acheron को. भाई पीक वाइफूज जितनी भी आती है ना जो मुझे बहुत पसंद आ जाती है उनके लिए भाई कॉन्स्टलेशन होंकाइस्टाररेल में भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता. गेंशिन की तरह नहीं खेल रहा मैं होंकाइस्टाररेल. इधर मिलते हैं हचक के समन्स, ठीक है, पर पैच, और हचक के समन जब मिलते हैं तो आराम से भाई हचक के कॉन्स्टलेशन समन. I hear the blue hour is very romantic. Do you have any tales to share? Perhaps Mr. Yang has heard. There is a large boat called the Eventide, anchored along the Sea of Dreams, where soft music and dancing persist endlessly every night. I ran into a wizened lady there. She was at the top. I think Black Swan के बारे में बात कर रही हैं यहाँ पर. सच में good powerful laptop hunter 70 है. Don't ask me that. Don't ask me. In the humid sea breeze, she spoke of her own youth. तुमको ऑलरेडी हम लोगों ने भेज दिया है पावरफुल लैपटॉप वाला.
They came to Penacony to कैरेक्टर pursue किस्मत their अलग dreams. लेवल पे चल रही है मेरी। एचएसआर की किस्मत Alas, एक्चुअली में बहुत अच्छी है भाई। our गेम्स तो lover's बहुत ज्यादा consciousness अच्छी है। was भाई मैं lost in E2S1 कर रहा हूँ इतने भाई 150 पुल में भाई मैं मॉर्निंग में मेरा माइंड ब्लो हो गया था भाई कि कैसे भाई क्या भाई E2S1 कितनी जल्दी हो गई भयंकर इजी। इतने कॉन्फिडेंस के साथ में बोला था अब E2 कर दूं, But she never said E2 निकल के सच में बंदा है। her eyes absent-mindedly gazing at the horizon for what seemed like forever. Finally, we retreated to the beach. अभी मेरा जो शोकेस वाला है एचएसआर का उसमें जिंगलू E2S1 लगी है, एक्रोन E2S1 लगी है। अब एक फ्यूचर में एक और कोई वाईफाई आएगी पीक, उसको भी E2S1 करूंगा और तीन E2S1 लगाऊंगा ऐसे ही शोकेस में अपने The dreamscape वाईफाई of को। chic, luxury, and consumerism, the moment of dusk. My companions have been there too. Then you all must have seen those who are इतनी करने जा रहे थे। हाँ इतनी कर रहा हूँ, पीटी बिल्ड कर रहा हूँ। अगर अर्ली मिल गए तो ठीक है, 50 पुल से ज्यादा नहीं करूंगा। सेविंग फॉर बूट हिल देन। नेक्स्ट कैरेक्टर इस अकाउंट में बूट हिल निकालूंगा। Everything has a price, and everything can be bought or sold. Even dreams themselves. I saw an Ultragear who was preparing to auction himself. When someone wins a bid under stipulated periods and rules, he would do the buyer's every bidding, becoming that person's very possession. That Intellatron had been auctioned off a dozen times, and I participated in his 13th. That was the grandest banquet I had ever attended. But never again did anyone cast another glance at him. This time around, there were no successful bids for him. This is what I've seen and heard. I didn't like boot hill thieves. I mean it's Sark thieves bro. ऐसा ही होता ही है। Wasn't like this a long time ago. Jade देखते हैं। Jade. I've traveled through the reality and dreamscape of the planet We'll see. festivities. Watched the tides. Jade में वो peak वाली feeling, peak vibe की feeling नहीं आई। And yeah, so it's good. Depend करता है उसका character कैसा है। The rich and impoverished. Character design, character का character कैसा है मतलब, ठीक है? इन स्टोरी है वो क्या कर रहा है। ऐसा ना हो कि जैसे क्लोरेंट ने देख लिया पहले ने, ओ माय गॉड क्या भाई हुआ है, और फिर स्टोरी में जा तो ले fucking NPC, my god, that was the biggest disappointment for me, trust me. क्लोरेंट मेरे को बहुत पसंद है, but that involvement in the story cut me off. This is precisely why life chooses to slumber. Should we still seek to change it? Miss Acheron, now it's okay, well अपनी कहानी बता भाई, वो बहुत जानना जरूरी है। There was a man from my homeland. Okay. At a time when the world was grappling with अच्छा 3 वाले शायद रेफरेंस देगा ये। pain, made a choice. He wove together the dreams of everyone in the world, linking people's dreamscapes, and shouldered this burden himself. ऑटो की बात कर रहा है क्या? This, he created a giant, a spiritual atom. Okay. Since that moment, मुझे नहीं पता एडम कौन है, पर होगा चाहे 3 में कुछ होगा। Earth becoming the pillar of the world's existence. As a price, those who found it hard to move forward, who could not advance, forever lost their future. बिल्ड बता दो अपनी एक्रोन का एक्सक्लेमेशन बिल्ड है सारा टाइप करो, लिंक पे क्लिक करो बीपी वेलकन। Living out their days peacefully in the man's created utopia. And it is because of the wishes of those people who wished not to awaken that this spiritual atom became unbreakable. And yet, you stand here right now, which also means that man failed. Because people must always move towards the future. Even if human weaknesses make them pause when they truly cannot move forward, humanity will eventually seek a way to save itself. And that man, he was never a failure. Like everyone in that world, he etched the possibilities of human nature into his heart. He was the sun chaser of legend, soaring towards the sky and embracing his final victory with his fall. He ascended to heights uncharted, only to come face to face with the sun, a place not visited by anyone before. His wings
would melt because of it, only for him to fall into the sea. And after that, countless others would surpass him, soaring to even greater heights. A fitting metaphor for the Nameless's trailblazing spirit. Thank you, Mr. Yang. I know what you wish to confirm. The universe has innumerable लाइट डैमेज क्यों डालो डैगर? लाइटिंग डैमेज क्यों? in these What's it with worlds, lightning damage? innumerable people who look alike. Yet क्योंकि मेरे पास अटैक ऑर्ब नहीं है. I too have embarked on journeys. पहले दिन प्लानर ऑर्नामेंट तुम्हें लाइटनिंग ऑर्ब मिल गया विद क्रिटिक डैमेज. सुबह सोचो पहले दिन कितनी बड़ी बात है. तुम पूछ रहे हो कि लाइटनिंग यूज कर रहे हो. व्हाट? तुमको लाइटनिंग मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है. Completely similar. मेरे को वो दो, मेरे को वो बताओ कि अटैक ऑर्ब एक्चुअली बेटर है लाइटनिंग से ऑन It एक्रोन. overlaps with my past. टेस्ट करके देख सकता हूँ मैं. That abyssal dream. बट पहले मुझे ऑन लाइटनिंग, मेरे पास लाइटनिंग ऑर्ब है अच्छा, बट रोप नहीं है मेरे पास. अच्छा फक ना मेरे को लगा मॉर्निंग मिला था एक. अच्छा नहीं है वो रेजिन से किया आपने. हाँ ना मॉडल रेजिन नहीं किया भाई मैंने. 2000 वो बचा के रखे थे रेलिक मटेरियल्स निकालने वाले. स्ट्रॉन्ग बॉक्स से निकाला. I don't mind, so long as I can alleviate your suspicions. There's something I still wish to know, Miss Acheron. Under that representation of the hunt, exactly what अरे अभी तक ये क्वेश्चन इतने लोगों ने पूछ लिया अखरोन, तो अभी तक उसने रिवील नहीं किया कि ये किस पाथ को फॉलो करती है. अभी तक सीक्रेट बनी हुई है. बैंकर बता दे. Mr. Yang, before answering that question, ले I ओ, wish to continue the अब फिर से घुमाएगी. नहीं बताएगी है. I like your analogy very much. Indeed, birds are born to fly. But in a distant past, their ancestors could only gaze at the sky in envy. They saw that faraway ray of light from above the heavens, piercing through the clouds and blanketing the earth. And so, time and time again, generation after generation, the birds spread their wings and took to the sky, attempting to touch its ceiling, all because the sun was there. Then, what if the last bird finally soars into the sky, only to realize that the end of the light is not the sun, but darkness? Oh. Yeah. Then why, exactly, do we even walk towards the light? Perspective change. Oh, Black Swan. उठा ले कॉल. ब्लैक स्वॉन पे क्लोजअप बाइक कर दो. बाप रे बाप. Having fun on Penacony, Acheron? This voice, it's not Constance. Could it be her companion? Though I don't know exactly what ये कंपेनियन नहीं है. कौन है पता नहीं. मैंने एक एस्यूरन किया लाइटनिंग और वो डबल क्रेट मिला. अलग बात है कि एक्रोन नहीं निकाला. मेरे को अटैक और मिला आज विद 12 सिटी एंड 8 CR 21 अटैक. सही है. अरे बिल्कुल सही. यूज करो बैंकर. She gave my whereabouts to someone who's tracking Acheron too. Acheron के पास इंसेन पर्सनल डैमेज बूस्ट है पता है. तो अटैक और इसीलिए काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है. पर डैमेज डेल्ट है ना वो बहुत सारा है, तो एक तरह से ओवर किल जाएगा अगर तुम लाइटनिंग ऑर्ब यूज करो तो. अटैक ऑर्ब इसीलिए अच्छा है काफी, क्योंकि Acheron काफी मिस करती है अटैक परसेंटेज ऑन हर. बोटिल अच्छा होगा. बोटिल मेरे को काफी अच्छा लगा. किट उसका यूनिक है थोड़ा. ब्रेक डैमेज फिज कैरेक्टर. Wait for me. I have something to ask you. Are you asking me to write your will? Sure. Go ahead. Not quite. I only want to ask, how exactly did she become a Galaxy Ranger? She's clearly not a path strider of the hunt, but you are,
aren't you? हाँ? Tell me, what's Acheron's deal? Sure. Heck, never thought I'd come across an ally. What a stroke of luck. ये बोटिल बात कर रहा है? हाँ, इसने हंट बोला ना? Memo keeper. White Oak. हाँ, ये बोटिल बात कर रहा है क्योंकि उसने हंट बोला, हंट फॉलो करता है. That lady's passed. Well, nobody knows. But if all you want is a simple answer. हाँ, काउबॉय टाइप वाले वॉइस में बात कर रहा है एकदम. Take a seat. That woman named Acheron is an emanator who should not exist. हाँ? अरे किस बात की एमिनेटर है भाई, अब बता दो. An emanator who should not exist. ये Acheron क्या है बे भाई, तो अभी तक नहीं समझ में आ रहा मेरे. एक तो वो बताती भी नहीं है सामने से, पूछ लेता है कोई तो कहती घुमा के. I thought this was exactly what you wanted. After all, I faithfully fulfilled my duties as you instructed. इसका बेटा चेकआउट किया नहीं यार, टाइम नहीं मिला मेरे को. देखूंगा, रात में देखूंगा. So, the genius of the Council of Mundanites wants to be my undertaker now. My, what an honor. Yes. And I'm pretty sure the people at the Strategic Investment Department would love to be notified of your death in due time. But let's not forget, you won't be seeing them, because I'm the manager of this task. Great. Then tell your people that Aventurine is ready to go in 17 system hours. Oh, you've got a lot of nerve. How exactly do you plan on completing your task while your hands are tied by the Harmony? Well, my conversation with Sunday convinced me that there's a traitor in the family, and that they hold the secrets of Penacony. So, I took the opportunity to set everything in motion. मेरे पे वेल्ड लुका टिंगन आसा सर वाला कौन सा यूज करूं? वेल्ड है, डॉक्टर रेशियो फ्री वाला मिला है. मेल चेक करो, डॉक्टर रेशियो है क्या फ्री में. लेवल 10 हिट करो, फ्री एक फ्री 5 स्टार मिल सकता है तुम्हें शायद. यूज हिम. Let's just wait and see. Sounds like a very elaborate way of saying that you failed. That's all I can say. Have you forgotten, Doctor? टिंगन पहला बिल्ड कर लो और हीलर में गैलागर है वो यूज कर लो. Do what you must. अभी गैलागर बैनर समन करो Acheron के, हीलर मिल जाएगा. अब गैलागर उसको यूज करना है हीलर. You've achieved what you desired, haven't you? पहला टिंगन गैलागर यूज कर लो, डॉक्टर रेशियो यूज कर लो, बेल्ट यूज कर सकते हो. An orbital support beacon in that gift money bag. Well, who knows? Maybe that's why I'm handing out cash even बोटिल का एनिमेशन मस्त है. ट्रू. गैलागर और लिंक्स कौन बेटर है? मैंने गैलागर ट्राई नहीं किया तो ये कंपैरिजन मत पूछो मुझसे. जब कैरेक्टर बिल्ड नहीं किया तो मैं कैसे बता सकता हूँ? Maybe I am. Who knows? Fine. Here, take this. ये क्या स्क्रॉल दे रहा है? Open it when you're on your last legs. हाँ. You'll thank me. Oh. What's this? डॉक्टर रेशियो अलग खिचड़ी पकाड़ा है. Medical advice? गायब हो गया बहुत बढ़िया. You catch on pretty fast, Doctor. संडे का इफेक्ट अभी भी चल रहा है इस पे. Asking me to solve a case without giving a single clue. How typical of you, you wing-headed scoundrel. But the way you're all on edge about that stowaway, it's just as I guessed it would be. As for now, Would
you be willing to support my performance? And keep the Song of Beauty alive in the cosmos? Wow, how fabulous! But why would you give such a wonderful gift to a random stranger like me? Well, you see, I can't bear to see anyone in this sweet dream suffering from poverty. That's incredibly kind of you. Thank you so much, sir. If you ever get the chance, please, feel free to come by and indulge in my singing. Sure thing. Oh, by the way, do you happen to know anything interesting about death? Death? हेलो चांदी भाई अंजन का बात करने का तरीका थोड़ा अजीब लगता है मेरे को सेम weird तरीका थोड़ा सा Oh, you see, I'm a tabloid reporter collecting ghost stories in Penacony. As you know, the more chilling the stories, the more attention they get. Maybe you could help me out. Well, if you're up for some gossip, it's not about death, but there have been some rumors about a guest at the reality hotel who fell into a deep sleep and didn't wake up. पहचाने नहीं It was like they were in some sort of coma. Nope. Nobody knows what caused it, but luckily the customer eventually regained consciousness. Well, all customers are under the protection of the family after all. Thank you. This will make for a very juicy headline. Unexplained coma. That's actually what happens to your body if your brain dies in a dream. But unfortunately, the customer ended up Silver, अबे silver. I can feel Main ID क्या हुआ तेरे? Is the harmony starting to... The world has truly lost its way. अवेंचर ने घूम घूम कह रहा है हेयर न्यू कोड आया तो क्या था पता नहीं रेडिट पे पड़ा हुआ है देख ले जाके This is some sort of prank show, right? इसने बैन करा तो क्यों बैन मारेगा Set up around here to film yourself doing good deeds, right? मैंने पहले चांदनी भाई पढ़ा Always looking for a quick way to get an audience. But you know what? A truly great show never comes easy. A great show will start soon, old man. But before that, I need to ask you something. Do you know where I can find death in this dream? Ah, I see. Another fearless youngster looking for death, huh? Well, let me give you a piece of advice. Don't think you're the first one who's ever thought of that idea. Death? Not even remotely innovative. I bought it from Dr. Edward. He claimed it was some exclusive fancy schmancy stuff. Now, what a disappointment. The effects were awful. First, some monster covered in eyes stabs you in the gut. And then all you see are blurry glimpses of buildings and lights. The sky was spinning so fast it almost made me puke. Is that all? Yeah, what else can you expect? Don't put too much stock in the Penacony movie industry. They even call this junk groundbreaking art. Can you believe it? What a joke. Well, I'll leave you be then. I hope you have a wonderful day. A monster covered in eyes. That sounds like the Memory Zone meme. But buildings and lights... I don't think those have anything to do with death. Well, that whole dream bubble was probably created using rumors and gossip. चैब्रो का नाम है ये एनपीसी का एंचरिन की तो अलग बीमारी हो रही है बैंक का ये किसी ने इवेंट किया ये इवेंट काफी अच्छा लगा मेरे को ये पूरा गैम्बल इवेंट है भाई पूरा गैम्बल इवेंट है तुम डाइस रोल कर रहे हो गैम्बल इवेंट है पूरा blissful reprieve to drown 1,000 sorrows let worries leave I know I have oh or are you just pitying me well
It really doesn't matter. As long as I have Soul Glad. You really shouldn't drink so much Soul Glad, my friend. It's not good for your health. Oh. The devil of... Yours with the love. They say it loves to appear to drunk people. Especially the ones Kada se kodne mila giant tune kiya bhi pura. on the side of the road. How funny. Yeah. Very funny indeed. Thank you. Does everyone have to go through so much torment before... Take care, my friend. If you ever find yourself in danger, remember that the hounds are always ready to help. I got these gems. Yeah, 120 jades मिले हैं. हाँ, सब 120 jades. What? सही में? You don't look good, my friend. If you need assistance, I can contact the hotel and have them wake you up forcefully. अरे वुल्जी ये पूरा इस एरिया सब पूरा एक्सप्लोरेशन बहुत हेल्प करता है कैरेक्टर एनपीसी. All right then. If you ever need help, don't hesitate to reach out to us. मिला है बाकी कल खुलेगा साथ. Oh. Well, actually, I do need a favor. As the most outstanding hound in Penacony, have you come across any stowaways? How could there be stowaways in Penacony? All right. Good luck with your work then. What was I even thinking? Family would never share. अरे बेचारा एवेंचुअली मरने वाला भाई लग रहा है. लेजेंड लग रहा है. ये देखो ये बच्चे गैम्बल कर रहे हैं बैठ के. Talk to me. Sure, but nothing too sensitive, okay? Uma. Yes, sorry. Wealthy people have fancy ways to enjoy this dream. But to be honest, I've never seen anyone who gives out money to others like you. So, are you trying to be the prince from the tale, handing out his gold leaf garment and melting his lead heart in the fire? I'm flattered. I'm no prince, and I just thought these gems would help you speak. So, as an investigative reporter, maybe you've heard something about death? Ah, another curious soul. I see. Well, that was actually the topic I was most into when I entered the industry. But my boss shut it down. How did your boss talk you out of it? Well, she simply said, आर्टिफैक्ट कब अनलॉक होता है कौन सा? वो आर्टिफैक्ट तो पता नहीं मेरे को याद नहीं. पर आर्टिफैक्ट फार्मिंग तो मैं pretty much level 50 के बाद ही करोगे. pretty much level 50 के बाद ही आर्टिफैक्ट फार्मिंग शुरू कर देता हूँ. candles and getting spooked by nightmare ghosts isn't exactly professional material. Guess she's got a point. Thank you for sharing. Were you wanting to talk to me? Sorry, I thought you were checking out something behind me. हाँ? इतना डबल मीनिंग बात बोली है ना. Is this? For me? Yes, it's for you. Is this for real? Someone is actually giving me a gift. Not for my parents. No, it's not much. I just want to ask you something. Cheap, हाँ कितना डबल मीनिंग बोला भाई. What's on your mind? Are you trying to ask about my father or my mother? Neither. I just wanted to know if you've ever heard about death in the story मत चल रही स्टार एल के सही है. Oh, you sound just like my father. Always warning me about danger, even in dreams. He's an Intellatron, so his dream entry methods are different from us organics. Can't count on him to protect me if something does go haywire. Funny, right now I'm still under his protection. How ironic. Hey, stay positive. I mean, he's 17 तो चलता है ये सब. Right?
Devil of Soulglad, Dangers in the Dream, and Nightmare Ghosts. इसका बेसिक अटैक अच्छा है. Death is a popular topic in this. जो ये स्नैप की आवाज है ना बड़ी satisfying लगती है. I've collected a bunch of rumors, but no use. ASMR. Snap is ASMR. मारा भोसड़ीगा. Remember what I said? Sigonians are better आ गई स्पार्कल आ गई रेसिस्ट स्पार्कल. Snooping around and sticking your nose everywhere. Is the smell of death so enticing, my fine fellow? This racist. Oh, it's you, masked fool. I should have guessed it. You're the imposter who appeared on TV after Robin's death, right? Imposter. I heard you got caught by the family. I gave you a clear clue. Befriend a mute. Simple and straightforward, you know? And what did you do? You messed it up and ended up as their prisoner. I told you to make friends with a mute, not become one yourself. You really let me down. What do you mean? You know better than I do. Who watched the little songbird that couldn't sing perish right before their eyes? मुझे मस्त लग रहा है. You did. कर रहा हूँ story. No, I mean, what did you mean by becoming one myself? Well, it means you'll soon end up like her, unable to speak ever again. इनका सील काफी अच्छा लगा. काफी strong है. Because I'm getting closer to the truth, right? Oh? Why else do you think I'm handing out cheap trinkets all over the streets, fool? All part of the act. Fool's bait. The more pathetic I seem, the more likely you'll come sniffing around. So, now that I've drawn you out, will you reward me with an answer for my efforts? Why should I help you? Don't you want to see Penacony descend into chaos? Well, I can make that happen. I just need an answer to one. तो सामने तो बच्चे लग रहे स्पार्कल. है बहुत हरामी पर स्पार्कल. When you asked me to find a mute, did you really mean Robin? ओ भाई संडे नजर रख रहा है इन पे. Fuck. And what if I say no? Then I'll thank you. Oh, the word no has never sounded so pleasing. Well done. I admit I underestimated you, but what difference would it make? Let me tell you something. There were 2 mutes, but one is dead now, and the other, though he's still in Penacony, I'm afraid you'll never find him again. Now I'm completely sure that I was on the right track from the beginning and never strayed, fool. Right now, there are only 2 things missing from my grasp. The meaning behind the truth, and the means to expose it. How impressive. That's quite a fancy way of saying I haven't learned anything so far. Not exactly. I've gathered enough clues to prove its existence, and that's enough for me. As for the answers to my questions, I'll find them within 16 system hours. Oh, really? Only 16 system hours? Well, let me lend you a hand. Here you go. This is my precious, mutually assured destruction button. And I have one just like it. When either of us presses it, the other and the whole of Penacony will go up in smoke.
If you're really so desperate for the IPC to take over Penacony, blowing up the chessboard isn't a bad idea. Start from scratch. That's where the IPC excels, right? फुल प्लानिंग करके आई है भाई, पूरा टेररिज्म मचाने आई है ये. And of course, feel free to reach out to me for my hospice care too. Oh, a deadly button, huh? Well, I guess the family didn't take your threat seriously at all. Otherwise, how on earth did you manage to bring it in here? I have my own ways. That's all you need to know. Well, I'm afraid I'll have to decline your offer. Who knows if your little gadget will actually work. By the way, I have no plans to search for the other mute friend you speak of. But it's good to hear that he's still here in Penacony. I'll handle the rest myself. I'll orchestrate a grand finale for the downfall of the family. And at the क्या है स्पार्कल का असली मकसद? Crumble. People will Penacony उड़ाने का प्लान सही लग रहा है. And those who couldn't speak will find their voices again. When that time comes, go ahead. Press the button. Light up the sky with a magnificent fireworks display for me. Catch you later, fool. You're still talking big. But sure, if that happens, I'll stay true to my word. Just don't let me down now, okay? So, number 35. You're back. Like your new lucky charm? Oh, yeah, Can commodity code really be considered a lucky charm? Commodity code on his neck. I didn't give you permission to speak, you Sigonian hound. The guys in black didn't say much, so I've no idea what you did to save your skin in that massacre back in the day. But I figured you must have had good luck, so I bought you. From now on, you and your good luck are my assets. Are we clear? Your first task is simple. In addition to you, I've purchased 34 other slaves. Okay, slavery चल रही है भाई HSR में क्या? Go and play a game with them. You came out alive after 2 days. It proves that you are the real deal. You're insane. Testing out if you're a good product. Aren't you worried that the money you spent on me will go to waste? I've got stacks on stacks, Blondie. The slave market is never short of self-righteous brats like you. But you look good, and that's why many customers are betting their fortunes on a scrawny brat like you. So go along now and don't let your master down. How much did you spend? What? My price. How much did you pay for me? Huh. You really want to know? Red copper coins. It was 60 tanba. No more, no less. I'll take my chances. 30 tanba. If I come back alive, you'll give me 30 tanba. Bro started gambling here. Deal? Are you trying to strike a bet with me? Oh, you've got some guts. Yeah, sorry, but that won't do. Don't forget your place, slave. You're not qualified to be at the table. You're
just a chip. A life thrown away in someone else's hands. Either you come back with more chips for your master, or you never come back. It's all or nothing. Don't embarrass me, my lucky hound. What brings you here, Gallagher? Some friends from the old days. Do you have a moment to spare, Siobhan? Siobhan. Oh, I have the whole day to spare. What? Ladies and gentlemen, welcome to Dream Jolt Hostelry. I'm sorry, but This bar offers a wide variety of drinks, but we draw the line at Soul Glad. this person sounds like a dude, but it's a C. Extraordinary. होता? We're dedicated to serving up रॉबिन की कैल्स होगा 20% बेटर होगी. रेशियो टॉपास इंजीनियरिंग टीम में 1 में वर्जन I'll whip it up. से ओके. अरे मैं तो भाई उसी में निकाल रहा हूँ. आई एम रेडी. लड़की है. बाय बाय बाय. लेडी एज कूल एज सरवाल. I think she's Sarwal. Who's Serval? Will you introduce me to her? Huh? Oops. She's heard us. Just spare them, my esteemed bartender. I'll take over the bar today. I'm getting up there in age, and I need some practice before I forget the skills that used to put food on my table. Where did you stash the ingredients? They're all under the counter. Since our guests have traveled from भाई afar, आवाज इतनी ज्यादा आउट ऑफ प्लेस फील हो रही है ना इस एनपीसी पे. मैं बता नहीं सकता हूँ. ट्रस्ट मी. Hey, my friends, do me a favor. Damn. Go around the bar and bring me She any kicked up. ingredients you fancy. आवाज बंदे के सामने जोर से बोलेगा तो उसको सुनाई नहीं देगा क्या. Non-alcoholic drinks for you. In the bar? बाहर चैंट रहे दोनों लोग. Aren't all the ingredients right there on the counter? why, we're in a dream, my lovely lady. You can help yourself to anything if क्या लगा अच्छा भाई. comfort, hunger, confusion, or even boredom. It's all within reach. गैलागर के सही बता रहा. पैंट का कलर देखना एक्चुअली में इंडियन छपरी वाली फील आ जाती है भाई. She just called me एवरेज इंडियन छपरी. पिंक पिंक फैन. ओके कप. जो गैलागर का जो ड्रेस के कलर कोड है ना भाई. A bartender needs to capture the bar's atmosphere, master technique, and spin a tale of mystery and anticipation. Only then can a perfect नहीं कैमरा एंगल इंटेंशनली डाला है लगता है. In other words, what you get from your drink is down to luck, so don't overthink it. Indecisiveness has no place when it comes to enjoyment. Collect ingredients. That being so, go ahead. Go ahead, my friend. It's so glad. Let's give it a shake. That's possible. You see Soul Glad everywhere these days. So why don't they sell Soul Glad in this? It's all about the bartender's pride. It wouldn't make sense for customers to come here and order drinks they can find anywhere else. That's the mindset I use when I brew my coffee. You're right, Himeko. Okay. And let me tell you, don't go easy on this. अरे यहाँ से उठाना है क्या ये सर. Can this be used for mixing drinks? Oh, and there's a note on. Oh, what should we exchange for it? And who should we give our? Whoa! The words on the note are changing. Happiness belongs to the noble. Does this mean we can take it? Doing good deeds does pay off. Thank you. That's quite a stash. Not sure if it's enough. ये लड़की का वॉइस डार्क है. पक्का जेंडर चेंज किया होगा.
The Dream Jolt hostelry only welcomes guests who want to enjoy a drink to their heart's content. मुझे कैरेक्टर मॉडल का एनपीसी मॉडल बहुत अच्छा लगा, बहुत वेल डिजाइन्ड है. But you have the talent. You'll attract a huge audience. You're destined for the Iris' stage, not for this rundown shack. Come with me. We'll become the talk of Penacony, shining light into every corner of the dreamscape. Please, Siobhan, I really need you. As you see, I'm entertaining my guests. Don't make me repeat myself. Fine. If you don't come along, I'll just sit here and not go anywhere else. Just... What's her deal? We can't discuss the... Hey, can you do that clockwork trick? Yeah, I'm counting on you. You're one of Siobhan. I just don't get why she won't leave this place. This rundown shack. Anything can be improved. Alright, she's calm. Angry face. अगर मैंने आपकी इमेज कट कर कंपोजिशन में रखी, बहुत खराब लग रही है, सही बता. एक बार स्क्रीनशॉट भेज, स्क्रीनशॉट भेज. Those darn Iris jerks! They're the ones who forced Siobhan into hiding. I can help clear the way for her. I can do her a favor. I'll go back and write a letter to the Dream Master, exposing the crimes committed by the Iris family. Siobhan will definitely appreciate it. I just don't get why she won't leave this place. This rundown shack with no customers whatsoever. नहीं जाएगी भाई, ये यहाँ से लग रहा है ना मानेगी ये. I've seen it. The crowd is going wild. Applause crashing like waves. The aroma of irises fills the air. A beautiful melody playing. Ribbons dancing around us. And the taste is sweeter than honey. I've seen that scene countless times in my dreams, and every time it mesmerizes me. That's why I have to bring her back to that world, no matter what it takes. Want to raise a glass, my attentive listener? Let's consider it a toast to my far-fetched dream. Master, I played 70. Maybe I'll have to try again. I just don't get. अरे यार ये अभी तक नहीं मानी. अरे भाई रुलाना पड़ेगा इसको लग रहा है. तो अभी ये रोएगी तभी जाएगी यहाँ से. It's ridiculous, right? I'm too timid and shy, longing to shine but afraid of stepping into the spotlight. You don't know Siobhan's past, and you have no clue how radiant she used to be. अरे इवेंट स्टोरी करने के बाद कुछ नहीं, एक्सप्लोरेशन है, एक्सप्लोरेशन कर सकते हो. Was unmatched. I know she probably thinks I'm just trying to ride her fame to get ahead. But all I want is for her to reclaim her place.
Well, talking to you has got me feeling a bit down. ये तो एक दिन और हाँ मैंने पहले ही बोला था HR का कंटेंट वीडियो में 10 दिन चलेगा बस हो गया देखो And bringing tears to my eyes. Maybe I should. Here's the payment for the drinks. Finally, Yeti. That's good for her. Radiant dreams may be enticing, but they're nothing more than dreams. Her drink is on the house. Please keep the money. When you're ready, go to Gallagher. तो गैलागर अभी क्या दारू बना के दिखाएगा क्या ठीक है कितनी पेटी पे मैं छेड़ कर दूंगा एक यार अर्ली दे दो बे That being said, mixing a drink is way simpler than you'd imagine. Just pick your favorite ingredients, toss them in a glass, mix it up, and it's done. So अबे ये तो बहुत गंदा लग रहा है बे explore the bar and bring me any ingredients you prefer. ये बहुत गंदा लग रहा है तूने उसको इमेज को श्रिंक क्यों कर दिया इमेज को श्रिंक नहीं करने जाती वैसे इमेज को श्रिंक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी इमेज को श्रिंक करने की जरूरत नहीं थी वैसे ही थोड़ा लंबा रखता और आउटर भी ऊपर नीचे चल जाता आई थिंक लग तो रहा है बहुत गंदा वैसे मास्टर कितना निकालेगा Nice work. Let me take a look. You found some interesting ingredients there. Now take your pick. Each drink has its own unique flavor. Drink नहीं किया just कट दिया है सही में tone for the initial taste and the lingering aftertaste. So, which one would you like to use as the base? The original formula is said to be Nunu's favorite drink. It's sour and bitter, and the bubbles burst in your throat like swallowing rusty chains, evoking thoughts of dungeons and prisons. Now that you've chosen the base, it's time to pick the adjunct, the ingredient that'll create a marvelous chemical reaction with the base. It should give an unforgettable taste without overpowering the main tone. So, what's your choice for the adjunct? Eternal and bright future. वदन के वेज द प्ले स्टोर में आ गया वदन के वेज इंडियन प्ले स्टोर में आया कि नहीं इंडिया में प्ले स्टोर पे आ गया क्या वदन के वेज me through the dreamscape wilderness. Those were haunting times. Too beautiful to be real. Mikhail. मेरा फोन पे दिखाएगा नहीं. Let's pick a decoration. Which style do you prefer? Anything you need, I've got it. मेरा फोन पे दिखाया नहीं गरीब वाला फोन है मेरा. अब बता क्या करो जो तेरे को सही लगे वो कर ले मास्टर कोई दिक्कत नहीं है. जो तेरे को सही लगे तू वो कर ले कोई दिक्कत नहीं है. इसका अकाउंट के सारे कैरेक्टर अभी मैं स्टोरी कर रहा है. एक्सक्लेमेशन बिल्ड टाइप कर ले. 8-9 कैरेक्टर देख सकते हो. एक्सक्लेमेशन बिल्ड HSR टाइप करो. अभिषेक बीपी वेलकिन लिंक पे क्लिक करो देख लो. फिर हम दिखा रहा है हाँ इंडिया में रिलीज हो रही है बद्री वेव्स. लो भाई बद्री वेव्स इंडिया में रिलीज हो रही है. तेरे को मोबाइल पे मेरे को मैं अपने भाई का फोन लेके आता हूँ देखता हूँ जरा.
यप इंडिया में रिलीज हो रही है वन वेव्स, मेरे भाई के फोन में भी दिखा रहा है। हाँ ये क्या है बे? ये क्या है? ये बदरिंग वेव्स थोड़ी है। क्या भेजा जोड़ तूने मेरे को एस्ट्रा? ये क्या है? The fuck is that bro? That's not बदरिंग वेव्स। YHK कूरो गेम्स लिमिटेड। हाँ ज़्यादा खुश मत हो, TF भी आया था प्री रजिस्ट्रेशन में बट रिलीज के टाइम हटा दिया था। हाँ तो TF तो रिलीज ही नहीं होना था ना। TF कैसे रिलीज आएगा भाई? टेंसेंट का पब्लिशर है उसका। टेंसेंट के सारे ऐप बैंड है इंडिया में। टेंसेंट लिटरली वो है, क्या कहते हैं, बॉयकॉटेड है बाय इंडियन गवर्नमेंट। बदरिंग वेव्स का कुछ भी नहीं है, कूरो गेम्स बिल्कुल भी नहीं है ना। आपका कूरो गेम्स आउटसाइड ऑफ चाइना है, वो हांगकांग है। May you always remember where you started. कंपनी Well, it's done. आई थिंक हो जाएगा रिलीज। और पीजी ध्यान रखना कि पीजीआर इंडिया में बैन नहीं है, पीजीआर रिलीज नहीं हुई है कभी इंडिया में। To the dead and the dying. देखते हैं, आई होप। Well done, Gallagher. You're not over the head. ऐसा तो Honkai स्टार पे रजिस्टर पे आया था। So are you satisfied? The flavor. कब होगा रिलीज पता नहीं, कमिंग सून लिखा है उसमें। More sophisticated than Soul Glad. एक्सपेक्ट कर सकते हो यार। मई वाली जो मई की रिलीज डेट जो बता रहे थे, हो सकता है मई में रिलीज हो जाए, मई एंड में। Especially with the adjuncts. I can taste the spicy. हफ्ते 2-3 हफ्ते में, अगर मई में रिलीज डेट होगी तो हफ्ते 2-3 हफ्ते में रिलीज डेट की अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। अप्रैल में हो सकता है ना, मई में बता रहे थे, मई एंड। Well, if you're expecting a profound answer, I'm afraid I'll disappoint you. The imagery it implies is pretty straightforward. It's just a glimpse of what this dream truly tastes like. Nothing more. Does this true taste have anything to do with that Mikhail? Mikhail. Yeah, that name does sound familiar. Acheron मिल गई, उसके बाद और 3 पुल में लुआचा मिल गया। पॉग सूरज, नाइस, कांग्रेचुलेशंस ब्रो। Someone calling that name. Do you remember? I was right about you. You guys seem to know quite a bit, and now there's no reason to hide anything from you anymore. Let's dig deeper into the case, and of course, I'll tell you a story about Mikhail. नींद आ गई बट Acheron ने लल। Let's start with what we know based on the clues स्टोरेज भर गया फोन का, कैंसिल क्लास पे खेलना पड़ेगा वूवा खेलने के लिए। or an invited guest. In other 24 words, आवर्स she's a यार, 24 आवर्स में स्ट्रीम खेल नहीं पाएगा, इसलिए सोचता हूँ ये भी रीजन वाइज रिलीज करेगा क्या? रीजन वाइज समझा नहीं मैं If you're on the जितेन planet of सवाल। festivities, stowaways are a common sight. You're bound to run into one sooner or later. After the incident, the hounds wasted no time searching for that girl in both the dreamscape and reality. But here's the thing. We only received bad news. And the trickiest kind at that. बदरिंग का अपडेट I think yes. Yes. Leaving no रीजन वाइज देखते हैं, वो तो अभी पता नहीं चलेगा ना, वो तो जब गेम आएगा तभी पता चलेगा, क्योंकि वो अब हॉयवर्स की गेम थोड़ी है, सेम रूट फॉलो करेगी। डेथ इरेडिकेटेड है। That's impossible. The problem now is not that she's dead, but that it's as if she had never existed in the first place. Let me be frank. This case, actually, is unlike anything the Bloodhound family has dealt with before. Dealt with before? So, death does happen in Penacony, if I understand correctly. You've witnessed it, so there's no need to hide. Even the shiniest city has its dark side. We're all adults here. Surely I don't need to explain too much to you. Confronting the family based on that alone would be naive. Death may occur in sweet dreams. So what? Such events are highly unlikely and only affect a tiny number of people. If you really want to delve deeper into this case, you need to understand the true problem with the family. I guess it's time to tell the story. चलिए स्टोरी एंडिंग में badass and OP होगा boy. Okay, I'm ready. Very perceptive. No spoilers.
यार आप मल्टी स्ट्रीम करेगा जी? मैं ट्विच पे स्ट्रीम करना शुरू कर दूंगा आफ्टर वदरिंग वेव्स के साथ मैं ट्विच ड्यूल स्ट्रीम करूंगा। ट्विच इधर दोनों तरफ करूंगा साथ में। Impossible in the realm of dreams. Find the legacy of the watchmaker, father of Penacony, and thus the answer to the question, why does life slumber? That's the exact wording. Hey, why are you laughing? Wait, did you write it? It's quite poetic. No, but I'm the officer in charge of this case. So how could I not know? I'm sure you must have noticed that this message. देख लेना किसी ने बोला था दोनों जगह स्ट्रीम नहीं कर सकते हो और ट्विच ने अलाउ कर दिया है। दैट वो बहुत पुराना रोल है। वो रिलीज डेट मई के एंड में हो सकती है। अभी प्ले स्टोर पे प्री रजिस्ट्रेशन आ गया है। Just our speculation. Actually, it's hard to believe that the father of Penacony and its actual managers are at odds. Now I can assure you that your speculation is absolutely correct. The family has considered the watchmaker an enemy for a long time, but the hounds haven't been able to track him down, as he seems to be living only in the characters and stories he created. Let me ask you a question. Have you ever wondered why the family allowed the watchmaker to send out such a ridiculous message to the outside world, inviting you here and causing chaos? So, you want to seize this opportunity to expose the watchmaker? Well, now you understand why the Oak family authorized the Nameless to assist in the investigation, but kept you in the dark, right? Because the watchmaker is not the legend of the land of the dreams at all. He's the most shameful stain in the history of Penacony. And he's the root cause of all the anomalies in the dreamscape. Okay. You don't get it? Well, बता जल्दी भाई। Mikhail, the betrayer of the family, he's the watchmaker. Okay, that is kind of obvious. ये थोड़ा obvious था, but मिखेल को बार-बार मिखेल पुकारता कौन है? मिखेल ही वॉचमेकर है। Understandable, yes. Here we are. Clock Studios theme park, the most popular entertainment center in Penacony. Wait, aren't we supposed to be discussing the watchmaker? I would have expected you to take us to. कितने घंटे की स्टोरी है जिसने भी कर लिया है? कितने घंटे की स्टोरी है? अभी टैकटाउन कर रहा है, मल्टी स्ट्रीम YT एंड ट्विच आ रहे, सब कर रहे हैं भाई, सब कर रहे हैं। मिस्टर पोके भी करता है। Its history in the most authentic way. To you, it's a fun place, but to me, it's a prison for the planet's past. You know that Penacony used to be the IPC's prison planet, right? All the prisoners were brought here, helping the Garden of Recollection salvage the leaking memoria from the macro void. The prolonged exposure to high concentrations of memoria caused a unique phenomenon. The dreams of countless prisoners intersected. मैंने तो यहाँ तक किया बस, okay. Each other in their dreams. चलो जिसने भी किया भाई, no hinting, no story spoilers. But everything has a price, and sweet dreams are no exception. In the end, the dream world was unable to alleviate the suffering of पढ़ करोगे तो 2 दिन या 3 दिन पढ़ के करोगे। पढ़ कौन कर रहा है? shackles and fought for freedom. He is Hanu, the great leader of Dreamville, the great peacemaker, and the faithful companion of the underdogs. So the character Hanu is based on a real life person? Haan, wait, what? History is always written by the winners. However, it's undeniable that 3 hour or 4 hour animation that draws from Penacony's actual history. These characters not only exist in Dreamville, but also in the distant past. Once you realize this, you'll understand why we're here. There are so many members of the Bloodhound family. मिकेल कौन याद है? मिकेल को अभी तक दिखा नहीं है, बट वॉइस लाइन्स में सुना होगा तुमने। उसकी आवाज आती रहती है जब तुम फायरफ्लाई के साथ घूम रहे होते हो। न्यू एरिया, ओके, दूसरा एरिया ये, दूसरा एरिया ये। मिकेल डायलॉग में स्किप नहीं करता। I
I've never seen anything like this, even when they're tracking down suspects. We don't need to go in. We don't want to draw any unwanted attention inside. We can just talk here. Let's find a quiet spot and continue our conversation. कितने मतलब मेरे ख्याल से 3 मैप हैं. Great, right? We can see everything from here, including Clocky. If all the characters in the animation are based on characters in reality, then Clocky's counterpart is definitely the Watchmaker. In the animation, he's Hanu's partner and one of the founders of Dreamville. Does that mean... It was a monumental war for freedom. अरे fuck यार मैं से escape हो गया. Fuck voice line. A motley crew of masked fools, nameless, history fictionologists, mourning actors, omen vanguards, even visitors from beyond the sky. In the end, they emerged victorious. Outlanders. Among them was the person who would eventually be known as the Watchmaker. But if you do the math, doesn't that mean the Watchmaker was around for several centuries? I'm not sure. Bro, Acheron निकल गया. लाइट कौन के ले जाऊँ? लुओचा. लुओचा मत निकालो. एवेंचरी निकालो. Summon Luocha. No, अरे fuck. Aventurine, not Luocha. I'm 13. No way. Not even close. If you don't have a sustain, go Aventurine. Don't summon for Acheron Celsi. With limited resources, threats from the outside world, and internal conflicts between major prison districts, the future of Ostana was uncertain. It wasn't until the Watchmaker approached the family with the idea of turning the prison into the planet of festivities that Penacony finally gained its name and glory. Does Aventurine apply any debuff? Yes, Alt से debuff apply करता है Aventurine. और Aventurine का अगर E1 निकाल ले तो वो basic attack से E1 की नहीं. अगर Aventurine E2 करता तो वो basic attack से debuff apply करता अपने. So that means you... No. I'm not his companion, but rather one of his many children. But I am indeed a traitor. Acheron साहब काम का चलेगा क्या? हाँ चला सकते हो. Not the best though. चला सकते हो. What did you do? I did nothing. And that's the worst betrayal of all. Just like you, I had close companions. We dedicated ourselves to 50-50 है. ये नहीं समझ आ रहा कि पहले Aventurine ट्राई करके जिंगलू ट्राई करूं या vice versa. Mikhail was too old to protect his children anymore. So we left the family to find our own path. We were branded traitors of the Harmony, even though the true traitors were someone else. While they continue to praise the Watchmaker's name in the world, behind closed doors, they condemn him on a pillar of shame. Nevertheless, we wanted to clear his name. We intended to find the real traitor, the one responsible for all this, and restore harmony to Penacony. But we failed. Too much time had passed, and the land of the dreams. Robin क्या फंडा है? Alt क्या करता है उसका? सबको advance forward करता है. Alt उसका crit damage buff देता है. I gave up, like a lost dog. The family accepted me and made me an officer, supposedly as a form of forgiveness. But it was actually a punishment. Since then, I've been completely cut off from my partners and my past. As for Mikhail, I heard he died in obscurity, in a place where no one could find him. That's when I realized that the Penacony I once knew would never return. We're truly sorry for what happened. But this is not the end of the story, right? Apparently, someone has inherited the title of the Watchmaker and has been secretly working against the family all this time. So fake Watchmaker है साला यहाँ पर एक. Well, that's one way to look at it. However, only one member has truly inherited the Watchmaker's title. Unfortunately, after all these years, Good night, I Jen. have no idea who that person is, or if they're even real.
Or just Mikhail's lost soul haunting the dreams. Oh shit. Lost souls. Do you understand why I'm spilling all this info? Because I believe the girl's death must be connected to the watchmaker's legacy. Bro, मेरा आईडी में मोसी 4 क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। क्या आप मेरे आईडी लॉगिन करके बता सकते हो क्या इशू है? मैं जब वो रिव्यू करता हूँ ना तब तुमको अगर देना होगा अकाउंट रोशन, तो मैं रिव्यू करके तुमको गाइड दे सकता हूँ। That's it. बट मैं अभी तो नहीं कर रहा हूँ ना रिव्यू। जब करूँगा तब दे देना, देख लूँगा मैं। But those willing to look me in the eye and hear me out? Let's just say, there won't be many. I've told you all I know is a sign of gratitude. half story, half bark and all. सब बहुत बढ़िया है। Something just happened at the theme park. Now, if you'll excuse me, good luck to all of you. How ironic. What's so different between the stowaways projected by Penacony today and the dream seekers once hailed as pioneers several amber eras ago? कितनी बढ़िया, काफी बढ़िया है हिसाब से तो। Does have a troubled past, it seems. While Firefly's whereabouts remain a mystery, his stories shed light on our suspicions about the true identity of the Watchmaker, his connection to the family, and the power struggles hidden behind. Hello, Praxi. Exactly. Gallagher suggests that the real traitor is someone else, probably within the Oak family. That lines up with what we've gathered so far. Firefly got involved in this mess because of the legacy, and now we're sure that Aventurine's accusations against Acheron are baseless. You're really into Clocky, huh? He's just a fictional character, not a real person. Clocky. Speaking of which, that Clocky who only reveals himself to you is quite intriguing. It's a shame. Now that we've confirmed a lot of our suspicions, Let's already pinned a message. To think about the clues we have. Send a message to Welt and see how things are going on his end. यहाँ में अपने एवेंचरिंग का स्टोरी चल रहा है। डैगर ट्राई करना, एक्रोन का कट सीन्स को रिकॉर्ड कर लो। बता रहा हूँ बहुत बैडास है। अरे देख लूंगा भाई, स्ट्रीम तो कर ही रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड तो सब होगा ही। या तो स्टॉप हिंटिंग या तो व्हाट डू यू वांट? Checking up on me. Let's get in and get out. Keep quiet. Seems they've made some progress. Looks like we're about to enter the depths of Dewlight Pavilion. It's been a smooth ride. Almost too smooth for... Let's see if there's anyone. Don't forget to let your friends in on the action. It's not pinned. Something feels off. A grand mansion like this and not a... Have you tried the nursery award game? No. Could it be due to the disruption caused by the emergency? Well, this door is open. Looks like we'll have to investigate ourselves. वैसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्लिप ही कर सकते, क्लिप ही सा कर लो साथ में। हाँ Light. I've made myself less noticeable. The crew can explain their presence as authorized by the family, but I can't come up with any excuses for being... I see. What in...
model in the sand pit. It's the golden hour. The footprints here are different from the rest. 2 sets of them. Looks like outsiders might have passed through here not long ago. Best example of how broken her technique is. Still confused. What should I pull, Neuvillette or Kazuha? Both. Stream 4. The gleam of old blades. मोरी का पिन उड़ गया। अरे पलक्सी पीछे पड़ गया भाई, उसका पिन करो पिन करो। चलो जिनका लगा हुआ था अब पलक्सी पिन कर दिया। दोनों को Quite a few mimetic guards. This said for some reason using her skill to kill enemies. Imagine doing this in SU. Array it works in SU, Palaxi. What do you mean? Ill fate descends. I weep for the departed. It too shall fall. Net markers activate. Time for a good old counterattack. No matter. Human creations. Destined for oblivion. Mind your manners. Beneath the water lies an endless abyss. Neuvillette निकाल लो 1 army. I think this is the time of animation power grab. It is पलक 500 के ऐसे हवा में Look. ये नहीं है बंदे मेरे पास इस Note. Looks like instructions from the butler for the other servants. Seems like the mansion's entire workforce were assigned other tasks before Robin's death. It must have been a big project to require 24K? अरे spend 24K मत लेकर. The Charmony Festival, perhaps. 150 No pulls. matter what their main priorities are, there should always be someone left at the mansion, right? 150 summons. So you're saying Jades या summons फिर ज़्यादा हो जाएगा. तो तेरे को टेक्स्ट बढ़ जाएगा नहीं? 150 24 के जेड्स होता है. वैसे तूने कैलकुलेशन किया बैठ के? अरे मेरे पास एक Acheron की इमेज पड़ी थी, मैं भूल गया, तेरे को भेजनी चाहिए थी चेकआउट करने के लिए. वाह बहुत प्यारी प्यारी आर्ट पड़ी तेरे को. शॉर्ट बाय कहाँ गया? डेढ़ से पुल में निकल जाएगा क्या? नेवलेट प्लस काजुआ बहुत ट्राई करो. पहले काजुआ ट्राई करना फिर नेवलेट, फिर मैं ये बोलूंगा. लोड हो रहा है, रुक जाओ, मैं तेरे को भेजता हूं, चेक करिए इमेज. बड़ा टाइम ले रहा है. ओके ये थी क्या? नॉट दिस वन. आई थिंक ये तेने लगाई थी ना ये तो हाँ ठीक है. जो मास्टर तू यूज किया ठीक है, ये फिट नहीं हो पाएंगे उनमें, देख के बदल रहा है. पर ये तेरे को भेज रहा हूँ आर्लेकिनो वाले के लिए एक भेज रहा हूँ, एक इमेज. बेटर क्वालिटी तेरे को ढूंढनी पड़ेगी बस. ऑलराइट चलो आगे बढ़ते हैं. इमेज भेज दो, कट करनी पड़ेगी. नहीं 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 अब नहीं है मेरे पास है, पर वो उसमें फिट नहीं होगी एक्चुअली बोलूंगा तो. वो देख के इमेज जो मैं देख रहा था ना वो फिट नहीं होगी, देख के पता चल रहा है. यार मेरे पे ऑलरेडी है. ओह ओके. No one here either.
Since no one's allowed It to took me enter pain let's to make download ourselves SR. I at had to home. delete WhatsApp and Discord. अच्छा है Palexi. Close to me so that WhatsApp I'd वैसे like भी to बेकार hear आता it है. too. सही बता रहा हूँ, मैं तो यूज नहीं करूँगा. मैं नेवी क्लैशिंग के बाद कोई पुल्स करूँगा न्यू पे. ओह As soon as I and the rest of the crew arrived in Penacony, मैं चाह रहा Mr. पहले Sunday HD and करने Robin कुछ तो मिलेगा showed वहाँ. up to greet us. I remember hearing something unusual in her voice, and now it seems I was right. Robin believed it was because the harmony had been tampered with somehow. But as far as I know, there aren't many entities capable of interfering with the power of paths. Meaning? On Discord का size 20 GB कब हुआ? अरे Palexi जान है. मतलब हो सकता है Palexi के पास 20 GB खाली होगा, but 4-5 GB उसका वो ले रहा होगा. या फिर wake the heck up? Yes, wake the heck up. कब सोया ना? नहीं आ रही और रात में फिर वीडियो एडिट करनी है, तो मैं तो भाई नींद के लौड़े लग रहे हैं मेरे. और क्या? The information about Robin, Firefly, and the other victims. I don't see any commonalities among them. Looks like the rumors were right. Death does seem to be targeting random victims. And based on Sunday's notes, he's no stranger to death. He's just surprised that it has resurfaced. अरे मेरे को याद आया, पता है आज हुआ क्या? मैंने कीबोर्ड ऑर्डर किया था. अरे कीबोर्ड क्लीन करने वाला जो होता है ना, ब्रश जैसा जो होता है, एक टूल किट होता है, वो ऑर्डर किया था. ठीक, आज मैंने मम्मी को फोन से ऑर्डर किया था, मम्मी के फ्लिपकार्ट से. ठीक है, मैंने मम्मी को बताया नहीं था कि मैंने ऑर्डर कर दिया है. मम्मी को, मैं सो गया, मम्मी को कॉल आता है ऑर्डर कंफर्म करने के लिए कि आपने ऑर्डर किया कि नहीं. मम्मी ने कह दिया नहीं, मैंने तो कुछ नहीं ऑर्डर किया है, वो ऑर्डर कैंसिल हो गया. मैंने अभी शाम को उठ के फिर से मम्मी ने जब बताया कि पता नहीं किसका कॉल आया था, बता रहा ऑर्डर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया. मैंने ले ओ, मैंने फिर ऑर्डर किया. अब वो 2 तारीख तक आएगा कीबोर्ड. फिर यार मम्मी ने कैंसिल करवा दिया गलती से. अब मैंने बोला कि अब कॉल आए तो कह देंगे हाँ मैंने ऑर्डर किया है, हाँ कंफर्म कर देना. यार ये फ्लिपकार्ट वाले कंफर्मेशन कॉल कब से करने लगे? बट मे बी प्रोडक्ट की वजह से होगा, क्योंकि लिमिटेड बचा था ना, काफी फ्यू बचे हुए थे शायद कीबोर्ड. This light cone is securely guarded. It must hold some important memories. According to Robin's interview, despite having performed on so many grand stages, her favorite performance was a pretend show she put on with her brother when they were just kids. I wonder how their relationship is now. बड़े वाले प्रोडक्ट पे करते हैं. Okay. Also losses. Yeah, time is a way of smoothing things out. The beautiful dreams of youth will eventually fade away. Mr. Sunday has done some serious research on his suspects. This traitor must have been causing trouble for the family for a long time. They all seem to be insiders, but I haven't met any of them. Huh? Wait, these characteristics. What is it? No, nothing. Maybe I'm just overthinking things. However, if this traitor really exists, could they be responsible? Perhaps that's why Sunday is taking this matter so seriously. Traitor. You traitor! It seems neither the Dream Master of Penacony nor this old Oti is happy with yes, मिल गया मेरे को. यार will you make Acheron post video? हाँ, कल डाल दूँगा. Morning में डाल दूँगा. Instead, they're more concerned about the Charmony Festival and the Watchmaker. Maybe the other family heads don't think death is a big deal. One thing's for sure,
There's a lot of internal conflict within the family, and everybody has their own agenda. That's all for now. Nothing more noteworthy. Before coming here, I had all sorts of scenarios in my head about dealing with the family. I did not expect an empty mansion. Watch out. Someone's approaching. I don't think trespassing अरे on Sunday आ गया. forbidden areas is the way to be a guest, Mr. Yang. And Acheron? The Galaxy Ranger? Our apologies, Mr. Sunday. Nobody came to greet us, so we entered without permission. I hope you can forgive us. But even if there's no one to greet you, you should wait for the host. Don't you agree? Even without the famous Galaxy Ranger. As far as I know, the crew has officially accepted the family's commission, so coming here will be unnecessary for you. On the contrary, that's exactly Acheron why Acheron का thigh tattoo काफी ज़्यादा अच्छा है, and it signifies something in her. Don't want any loose ends. Well, since you've come with goodwill, I have no reason to show you the door. Rest assured, he hasn't figured out that we went through those documents. While the truth remains उसका a सामने ही mystery, बोल रही है वो इससे. I'm What getting the close to fuck? it. I assure you that the traitor will soon pay the price. संडे ने कैसे बहरा रहा है क्या? संडे को सुनाई कैसे नहीं दिया जब सामने उसने ये बोला उसके उससे? I have a question for you, if you don't mind. How did the family come to the conclusion that the murderer was within the क्या था भाई? family? What? That was weird. With What? all due respect, it's in the IPC's interest to wreak havoc before the Charmony Festival, and the family has every reason to suspect the IPC's involvement. Well, other family heads share the same suspicions as Still you. better secret ये भी. In my opinion, the true murderer would never have drawn as much attention as that ambassador did. Not to mention, I personally shackled him a while ago. However, I'll give you a suggestion regarding your suspicions, Mr. Yang. You should be more cautious of Aventurine. While the wicked can't break through high walls, they can plunge their evil dagger into Oh my God, dagger! मैं story में आ गया भाई, मैं story में आ He's a गया. businessman, Let's go. not some philanthropist. But right now, he's out there handing out his wealth on the streets. And he went to the Clock Studios theme park all by himself. Who knows what kind of scheme he's cooking up? While the family is dedicated to keeping our guests safe, it might be wise for you to stay alert. You never know what unexpected troubles could arise. Hello, Ahmad. According to a Peerpoint hotline tip, there was a major breakthrough in the shocking Ejhazio Aventurine case. The suspect has been arrested. This fraud पक्का बेटे के साथ linked to many departments within the Interastral Peace Corporation and the Intelligentsia Guild, causing a large drain in manpower and What is this game? Genshin Impact. resulting in the IPC honkaistarrail है भाई. massive loss. The case's main suspect originates from Sigonia 4 and is one of the survivors of the second Kataka Abjin extinction event, who does not carry an interstellar refugee travel permit. As per Strategic Investment Department head Diamond's sentiments, the IPC has appropriately relocated the suspect in the spirit of the Charter and will continue to conduct further investigations as to the motive of the suspect. What pretty eyes. Ooh. Tell me, do they shine in the dark? तो जेड एक्चुअली में जज वज है कोई. डैम यार, ये कितनी मॉमीज पंप करते हैं भाई एचएसआरएल. नहीं, एक से एक मॉमीज पंप करते हैं ये भाई कैरेक्टर एक्चुअली ब्रो. होली डैम. Well, if they did, I'd sell them in a heartbeat. You don't know how many people long for your eyes to be closed forever. As a servant,
You should not resist your master. Yet, Dagger control, no control, Galaxy. Unleash your inner demon. no lawyer has the audacity to defend you. Perhaps you ought to represent yourself. Not difficult, but definitely pointless. You're pretty confident on your eloquence. Did you also think that when you lied to the Intelligentsia Guild? Okay, I will get back to study. कौन सी study? You wanted the perfect construction material. All I did was offer a possibility. It was just a small wager. If your luck holds out, the IPC will dig something up from the golden sands of Ejihazo. Maybe even the Sand King's remains. Pity your luck has run out. I'll admit that. What I'm more curious about, though, is why such a grand scheme failed to benefit anyone in the end, including the perpetrator himself. Madam, I already have what I want. To be brought before you for the next high-stakes gamble. Then let's talk about the second gamble. Tell me, what are you prepared to wager? I like her pink hair, you know. My life. कलर काफी अच्छा है. वो थोड़ा सा लाइट पिंक है, डार्क बताओ ना. What do you want then? I want your Lenore to meet with me. I have something to say. And then what? I want cash. It can't be that simple, can it? It is that simple. 30 tanbas. The remainder of my market value. यहाँ भी गांबा करने में लगा भाई. 30 tanbas. Pink hair is my weakness. I see. No less. With this money, I'll climb to even greater heights than you. Grasp even more riches than you. E2S1 पक्का वो डिपेंड करता है किट कैसी है. ब्रोकन चाहिए मेरे को. E2S1 करने के लिए करा वाइफू भी होनी चाहिए और ब्रोकन भी होनी चाहिए. E0 पे. Interesting. A pity Diamond won't see you. No one gets to see him. From here on out, I am Diamond's representative, and I will decide on his behalf. You're wrong. 30 tanbas. I'll give you that. And much more than that. It's easily 106. Okay, boy. Status. So Sanada reference. Power. To Sanada? The IPC will give you whatever you want, even what you don't want. Kakavasha. A good name, but unfortunately destined to be buried in the dirt. You, though, you deserve to live. Oh, जेड यहाँ पर एवेंचरिन की पूरा वही चेंज करने में लगी हुई है. फ्यूचर. Go. Pick the clothes you like. Then choose your desired identity. And then use them well, child. May your plans never suffer failure. Life is like a long-term investment. No one can beat Sunada. Those who choose correctly. Sir, mostly static images डाल के चुतिया बना दिया. Nah, I do not agree with that. मैंने बहुत visual novel देखी हैं, पढ़ी हैं. So this kind of thing, ये थोड़ा immersion रखती है. But luck has always been on my कुछ aspects में. तो थोड़ा बहुत अगर ये है, I am down. No problems. Is it because Gayatri blesses me? और बैक स्टोरी के लिए इस टाइप को यूज किया जाता है तो अच्छी चीज है. वो तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा. बट मैं विजुअल नॉवल पढ़ी तो मेरे लिए सही है. इट इज अ गुड गेम. कैन आई ट्राई? यस, इट्स अ गुड गेम. यू कैन ट्राई. यू विल हैव फन. एडिक्शन वार्निंग दे रहा हूँ. गेम एडिक्टिंग है बहुत ज्यादा. स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा. Even if I overcome this difficult खोल के खेलते रहोगे बस, बता दे रहा हूँ. What would come next? What awaits me after this glorious gamble?
An even more glorious one? Will I return triumphant with unending riches after countless successes, or will I encounter failure, never to return? I'm pretty sure you already have some ideas. Lowly gambler. नोबिता का मॉम को मस्त थी एग्रीड। अरे हाँ, जेड के वॉइस एक्टर नोबिता के भी है ना, सीएन भी है ना, वो तो जेपी भी है ना। पर Am I dreaming, or have I gone completely insane? Perhaps both. Forgotten me already? When you were strapped to that electric chair by a mannequin warlords, who was it that gave you the idea? Fine. I may be crazy, but I'm not stupid. Get out of my head, newborn of the Harmony. संडे ने इसकी गांड डाली, सही बता रहा हूँ। एवेंजर की बैंड बजा दी संडे ने, वो भी एक कट सीन के अंदर पूरी। एवेंजर की स्टोरी डिप्रेसिंग, तो आई मीन ऐसे प्लैनेट से आता है जहाँ पर पावर्टी, यू नो, ये रेसिज्म, ये सब है वहाँ पर, स्लेवरी हो रही है, समझ रहे हो? डेजर्टेड प्लेस है पूरी, यू नो, प्लैनेट खत्म हो रहा है, समझ रहे हो? तो समझ सकते हो ना, आपका डिप्रेसिंग प्लेस है पूरी का। Why not? Well, you may have fooled everyone, but you can't fool yourself. I can show you. Before you're entirely gone, I'll be with you for the last stretch of your road. Let's have a heart-to-heart while we walk. Okay. What exactly are you? Most people in this world spend their entire lives just to reach one outcome. And I am that outcome. Kakavasha, I am your future. First, I'm hearing things, and now I'm seeing them. Great. Am I going to be elevated into the Harmony's Emanator next? कैसे अरे यार, एवेंजर किट दिखवाता ना तो पता चलता कि उसकी टेक्निक में कौन से सिंबल पे कितना डिफेंस मिलता है उसको। Why are there no guests here? Just a Pepeshi? Oh no, Aventurine child version. A child? Oh no, ये Aventurine as a kid है, but definitely. I thought minors weren't allowed in Golden Hour. What's wrong, mister? Yeah, oh You don't shit. look well. Impossible. They're pretty, aren't they? मेरे ख्याल से For Mama Funga. Colorful eyes are said to bring good luck. आई थिंक ये, हाँ, इसकी आईज बताएं ऐसे नॉर्मली ऐसे नहीं डाल दी हैं, इसकी आईज एक्चुअल में स्टोरी के ओरिएंटेड करके डाली गई है। ठीक है, You have pretty eyes. एवेंचुरिन too. जिस रेस का है उस रेस के हर पर्सन की आईज मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ होंगी। Are you alone? Where are your parents? They're in that amusement एवेंचुरिन ही प्रोटैगनिस्ट है राइट Papa नाउ। and Mama went in first. I'm just about to go look for them. I have to go. Goodbye, mister. Hope you have a good time too.
those eyes. No, it can't. There aren't any Avgens left. लेफ्ट ऑल मेरे ऊपर में देखो कैसे स्टोरी का जो वो लिखा था ना टाइटल कैच अप दिस यंग एवेजिन सब उसमें काफी वो है. Stream forward, the gleam of old blades. बड़ा आने जैसे नहीं लग रहा था. वाकू वाकू वाकू. Papa, Mama, wait for me. Only on Paniconi, am I? What are you still doing? Well, you've known all along. The family truly showed leniency. समझ लगने लगा मेरे को तो. Why would there be a need for such high walls and deep moats? However, people don't see it like that. Especially since the flavor of the dream syrup is so alluring. You will receive no charity on Paniconi. And relying on your own strength alone to topple high walls? Not a likely fate. Which is why, once you step into the hotel, you remove your high hat and beg everyone you come across for help. Like a hyena scavenging for scraps in the desert. Because you know that opportunities are fleeting. Well, when you put it like that, even Ratio's a teeny peacock analogy sounds pleasant. Okay. Well, you know how rare it is for me to give you the straight dope. Sunday है सुसान का चिकन है rice penis. Rice penis. It's good timing that you mentioned the doctor. I'm especially fond of what you and he have in common. The conspiracies, calculations. Especially the part about the finale, a magnificent act of betrayal. Oh, when everyone thinks this way, who would even suspect that it was another trap you've meticulously devised? Go on. Tell me I'm right. You know who you really are, Mr. Cavalier Gambler. Uptight, overcautious, massive inferiority complex. You've won so much, you're still so afraid of losing. They only see your big bets, your bravado, the full house, the straight flush. They don't know the other hand is below the table, clutching your chips for dear life. It's a heck of an act. No wonder the tavern sent you an invite. You're a natural kid. You don't stop at fooling the audience. करने में 3 साल लगेंगे क्यों? आता बादा बाबा को साल. The best way to prevent others from seeing your true colors is first being able to fool yourself. Of course. I know you all too well. But it's strange. Why did you decline that invitation? You had the chance to embrace elation. Was that not what you most wanted? But you chose the IPC instead. For the preservation? I doubt it. Do you even have anything in common with the preservation? Oh, I thought you knew. Didn't you say you had me pegged? We're done. Either stop talking or disappear from my sight. That's fine. But who exactly is about to disappear? Lol. Well, it's not going to be me anyway. Make a wish.
The sounds, okay. Presence plays a reverberation. Fucking pronunciation of mine. Oh, Playing hide and seek. I'm really look, Londe. Bhagada saade. इसके अंदर से आवाज आ रही है। इसी के अंदर से आवाज आ रही है। ये वॉइस तो वेंटी की है। अरे अब तुम बोल रहे हो तो हाँ यार, काइंड ऑफ। Hide and seek. When Mama said goodbye that day, how many catechins were like jackals hot on your... I know you won't forget that sound anytime soon. Those shrill cackles. You had to hide right under the noses of those savages. You and Big Sis, playing dead, drifting in all that bloody water. Completely ruined that shirt. Shame. Wasn't that the last one Dad left behind? It wasn't ruined. Come on. It's a rag. It's not like you can ever wear it. Now you don't have to hide. You probably won't even deign to get your pretty outfit wet in the rain. Your social capital has changed after all. I've never changed. On the contrary, now you're the one who does the hunting. The last round of hide and seek, and you get to be it. You should enjoy it. That child. Could he be in here? Stream forth the gleam of old flame. अरे this is too easy bro. Acheron actually बता रहा हूँ, सही में spoil कर देगी तुमको। Is this? ओ भाई अंडा। Preservation stone. A topaz. हाँ। What? Does her cornerstone wrench at your heart, son? I was merely curious at why it was here. Maybe that winged guy put it here. To taunt you. Just to make you... The cornerstone's hue is the same as the radiance of Clipant's body. I've got to give it to you. I've heard a lot of baloney, but that lie deserves a prize for sheer nerve. If he were just a little bit smarter, the jig would have been up right there. This is just bait. Of course. That's why Ratio's betrayal was one of the keys to your plan. I have to say, that doctor's acting was superb. डॉक्टर रेशियो ने एवेंचून को धोखा दिया पहले, बट डॉक्टर रेशियो और एवेंचून एक्चुअली मिले हुए थे और डॉक्टर रेशियो एक्टिंग कर रहा था एवेंचून को धोखा देने की, तो घुमा फिरा के डॉक्टर रेशियो ने संडे को बेवकूफ बना के उसे धोखा दिया है। हे भगवान। Or maybe he wasn't acting at all. Okay, अब ये Sunday didn't become head of the Oak family by acting sloppy.
obsessed with control. You have to give him enough detail to satisfy his meticulous nature, but not so much that he gets suspicious. Which is why you had Ratio seek him out and leak the plan on purpose. To prevent the other party from suspecting anything. The intel you gave to Ratio was all true. He spoke the same to Sunday. Finally, Sunday took the bait, found the other cornerstone, and before you know it... Hello, Krito. Everyone's distracted enough for you to steal the third stone right out from under them. Why don't you stop rummaging through my mind? Your mind? It's our mind. You're me, and I'm you. We're the same. The best way to prevent others from seeing your true colors is to first be able to fool yourself. Really? You can't even fool yourself. You just got lucky this time. This is the other cornerstone in Sunday's hands. Rather beautiful green. Just like you. Smooth. Cunning. Tell me, what's its name? Why are you even asking me? Must I do all the work? Aventurine is the stone of luck and trickery. That's what she said when you received the stone, wasn't it? This type of stone isn't rare, but its hue is very similar to a certain gem. In fact, it's often used as a substitute. And that more precious gem is... jade. Even Sunday can't tell the difference. Oh, looks like jade can be substituted for aventurine, too. Sauce for the goose. Aventurine, topaz, jade. 3 elites, 3 cornerstones. Wait. So IPC had a jade, एक तरह से. Oh. IPC had. You're even more united than the family. Oh. As I've said before, 3 chips are sufficient. All or nothing. But will it be the former or the latter? We'll find out soon enough. So, where's the real aventurine stone? Take it out. Let's have a look. अभी तक छुपा के रखा है Aventurine stone. Suddenly, you don't know where it is? I just want to hear you say it. After all, it really does resemble itself. As you wish, then. They never went anywhere. Oh, इसका different है. Piled up with these cheap baubles. एक रियल पत्थर का नेम है मेरे को आज पता चला. Hi, what? Just look at it. Shattered. Just like your life. Poor thing. A humble pebble coated in the most lustrous sheen. Snapchat एव Snapchat कौन यूज करता है? एव मैंने आज तक Snapchat नहीं यूज किया. You're absolutely clear about the consequences of doing this. Blasphemy against Klipoth's body. You think the IPC will let you get off scot-free? Well, Diamond has always been all about results. As long as I could create value far beyond the cost, the ends justify the means. How else would the family be fooled if there was no price to pay? It doesn't matter. Even smashed to smithereens, the preservation's cornerstone can still be used. Its effect may be greatly diminished, but it's enough for me.
and the choices you prepare for yourself always come with a strong impulse for self-destruction. Do you truly Acheron का पावर कैसे मिला? the risk, the greater the rewards? I wouldn't have guessed you'd be so loyal to the IPC. स्टोरी में कुछ चीजें हैं जिनसे मैं थ्रो ऑफ हो गया हूँ, मतलब मैं समझ नहीं पाया कुछ चीजें हैं. So much you don't see. Which is also why you'll never see how I'll win it all. That is, if you can do what it takes. We'll just have to wait and see then. The cornerstone is gone. Another illusion of the harmony. Huh? अगर आप कुछ और कर रहे हैं स्नैप डालो, आप कुछ खा रहे हैं स्नैप डालो. Oh, Aventurine, baby. Kid, young Aventurine. Yes. We meet again. Did you find your mother and father? Of course. Big sister. तो कितने NPC known हैं? J Topaz Aventurine बस इतना ही है. अब बहुत है. IPC is a corporation है. Interstellar Peace Corporation. तो उसमें काफी IPC members होंगे. I think Dr. Race भी IPC से ही है या फिर different है कुछ. Yes, that's it. Putting many drawings together and turning them into a moving wall painting. They put me, Papa, Mama, and Big Sis together, turning us into one big family. You should give it a try too, mister. You look sad. अजीब लग रहा था मुझे क्वेस्ट के टाइम. ये पूरा उसमें ना नहीं मेरे को नहीं लग रहा. वो जरूरी भी है ऊपर से कि इट्स इम्पोर्टेंट यू नो. ये क्या है? टारगेट स्कोर. हाँ भाई देख मिनी गेम हो जाए थोड़ा सा ना. मैं लग गया क्या? मेरी एचपी लो हो गई. चाइल्डहुड पे ऐसा गेम खेलने को मिलता था भाई. That's jam, baby. Woo. How's that? Not a bad score, eh? Boring. लौंडा चला गया. मूवी मोड सीख. ओ दो. ओ बाप रे बाप इसमें जेम्स भरे हुए हैं. वेट. फास्ट एंड फ्यूरी नट्स पार्ट 2 पार्ट 3. अबे भाई सीक्वल मोड. ओ भाई ये 15,000 पॉइंट्स. ये यार मजेदार होगा गेम. फुरीना का ऑल्ट भी तो ऐसा ही बैकग्राउंड. हाँ फुरीना के ऑल्ट में भी तो वैसा ही कुछ बना रहता है स्क्रीन पे. नहीं पीपा है. अबे ना मेरे को ठीक लगा. मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. Fine. Stream 4. Gleam of old blades. Again. I weep for the departed. It too shall fall. An elusive foretelling. Ill fate descends. Enemy targets detected. Ready for another? Net markers activated. Time for a good old counterattack. Hedge your bets. Spend freely. Another journey begins, destined for oblivion.
Okay, we need to read this. Gains a shield that absorbs damage and increases effect by 50%. सभी कैरेक्टर 50% इफेक्ट पूरी टीम पे 50% इफेक्ट रहता है, ठीक है. Before the ओके एवेंचरिन का 42% क्रिट रेट मिलता है ना. 7157 का रेशियो एवेंचरिन का 3 के डिफेंस के साथ. I weep for the departed. Acheron का रेशियो 80-200 था. सही में 66-229. फ्यूजन है ना, तो 12 क्रेट रेट में से फ्यूजन का मेरा. Gems. This is what exploring the cosmos is all about. कम ऑन, एक और अर्ली दे दो ना. Why aren't you talking? You've piqued my interest. I'll admit that. Oh, you sound sincere. Well, sincerity is one of my traits that everybody likes. And I have precious few of those. Our quaint journey through this amusement park still isn't over. And अच्छा जपाड एलसी दूंगा. अलविदा जपाड. हाँ जपाड एलसी बेहतरीन है. एवेंचरिन की सेकंड बेस्ट इन स्लॉट लाइटकॉन यही है. सेकंड बेस्ट इन स्लॉट लाइटकॉन एवेंचरिन का यही है. अरे यार मेरे को ये टेस्ट करना था यार, भूल गया. मेरे को फायर ट्रेल ब्लेजर सोलो सस्टेन फायर ट्रेल ब्लेजर ट्राई करना था विद यू नो Acheron, क्योंकि ट्रेल ब्लेजर का जो टॉन्ट होता है स्किल का वो डीबफ है ना, तो मुझे ट्राई करना था यार. करूंगा ट्राई कर लूंगा मैं. I got Acheron. Nice, Zero. Oh, congratulations, bro. This place, it's so tall. And there are so many flowers here. Fix this. This one's for you. अबे मैं कहाँ घूम गया बुलबुलैया में. A dead end? मेरा E2 हो रखा है. Nice. Oh, what's on your mind? It's got nothing to do with you. Do you need a hand? These are manacles on you. That man gave you your first job, and you made your first pot of gold. I remember it all too well. You wrapped that iron chain around your fist, for that is the only tool you could find. Then, in that maze, you... 1-2 आवर तक रहता मेरे हिसाब से. Shut up. ये जो इफेक्ट है बाप रे, तब तो एक्चुअली में सर घूम जाए. 1-2 आवर तक ये इफेक्ट ज्यादा है यार काफी. Well, from what I see, you refuse to confront it because it only proves your weakness.
How could a weak person take such daring risks? That's right. You love the thrill of danger. But you refuse to let go of meaningless sentiments. Even in this beautiful dream, the only thing you dare allow yourself is death. In your hands, those who follow you could have become Joker cards. They're far more useful that way. It's not like this is the only place the family ever cut corners. You could have had tons of action if you weren't so all or nothing. All it takes is a meager sacrifice. I bet Opal would have resolved this without a fuss. A pity you're not him. Well, you wouldn't be in this state if you just get आवाज इसके अंदर आ रही क्या? out of professional intent. ऐसा लग रहा मॉनिटर हो गया. हाँ ऐसा लग रहा मॉनिटर डैमेज हो गया, मॉनिटर खराब हो गया. नहीं ऐसा इफेक्ट है. But it's not that I don't कहीं सहमत नहीं खराब हो गया बैंचो. It's more like I couldn't care less. Get it? मैं लिटरली ईयरफोन उतार के देख रहा हूँ कि छत पे कोई तो नहीं है. रूफ से आवाज आ रही मुझे लगा. ऐसा वो है साउंड ईयरफोन में आ रही है. Legit. The odds are obviously not in your favor, so how are you just breezing by? But did that masked fool's words awaken something in you? मुझे लग रहा था कि बाहर वेदर खराब हो गया. मैं सोच सही से एकदम लेजिट मको बात करने में ईयरफोन उतार के सुन रहा हूँ. वाह. Everything? You mean it could make all the cards on the table just disappear? That's cheating. If these leaves could be brought back, would they bloom into new flowers? हेलो मिडनाइट. मैं ज्यादा सोने बाबा, बाकी की स्टोरी मैं खुद कर लेगा. ये बहुत तेज नींद आ रही. ज्यादा सो जा. गुड नाइट. The lucky charm Mama left you is made from. बाकी चाहे हाँ तो चार्ट देख लेगा. हाँ. Did you never consider selling it? You obviously could have lived a normal life like Big Sis that way. Looking back, that was the better choice. Mama only left us with 2 pieces of jewelry, a necklace and a lucky charm. एवेंचर के लिए सेव करो या इवन एक्रोन का एवेंचर के लिए सेव करो. एक्रोन का इवन वर्थ नहीं है, E2 वर्थ है डायरेक्ट. एवेंचरीन बट ज्यादा वर्थ है एक्रोन के कॉन्स्टलेशन से. You can zip it if there's nothing to talk about. I know. You must remember what Big Sis told you. I'm OP mod very OP नहीं करता. मेरा तो अभी 7:58 हुआ शाम का. 7:58. इधर 12:30 बज गया रात में बैंक है. एक्रोन एलसी और एवेंचरीन. मैं ट्रायल में एवेंचरीन खेल रहा हूँ. बहुत स्लो पेस चल रही है. फील हो रहा है. हाँ स्टोरी स्लो पेस्ड है. काफी स्लो पेस्ड है. का पेसिंग काफी स्लो है. और एवेंचर इस वाले क्वेश्चन में एवेंचरीन ने बहुत फोकस किया है. एवेंचरीन की कैरेक्टर पे इतना ज्यादा फोकस किया, लगता है यही प्रोटैगनिस्ट है इस स्टोरी का. प्रीटी मच एवेंचरीन सबसे ज्यादा मेन फोकस अभी इस स्टोरी में कैरेक्टर. A lifelong regret indeed. Enough. Do you not have anything better to talk about? Oh, shut me down like a champ. Well, I guess when it comes to mind games, this isn't exactly your first rodeo. Hello, Rice. I think I finally get you. Woo! You are nuts! In the end, I'll ruin this beautiful
engineering real progress इस quest का Well, you stuck to that start to finish. Think about it. There's a Stellaron in play. The fabulous Robin loses her voice. 2 unsolved murders. बाकी चीजें भी थी पर most of part engineering ले गया. To go head to head with Sunday himself. The only thing to pique your interest is one word. The last SRS good but Wuthering Waves के लिए delete कर दिया. Okay, Wuthering Waves अभी आई नहीं है ना. death. But whose exactly? We'll know when the dice falls. All right then. Reserve a seat for me in the audience. I'm curious to see just how capable you are. Still, you never answered my question. If you could start over, would you still want to be the child who received Gaia's blessing? इस पे क्या आंसर देगा ये? हाँ या ना? कुछ नहीं बोले इस बॉस में. What the fuck, bro? It's so quiet this time. Is he finally gone? Or am I the one about to disappear? Finally, made it out of this place. We're going home? But I don't want to go back yet. अब ये क्या है भाई? ये तो दिमाग का फन ये बना दिया है लग रहा है. हाँ? केक क्या दे दिया बहन चोर. सिर्फ 7 एनर्जी क्यों दी है? एक्टिवेट क्या? हाँ उधर कुछ नहीं होगा. एक्टिवेट आओ हो गया. साइड में जो दिया था ना वो फर्जी दिया है तुमको बेवकूफ बनाने के लिए. It's so fun here. I want to stay here forever. And no rock. There were rock, but no water. अरे fucking हानू मत बनाओ मेरे को. हानू वाला मेरे को पसंद नहीं आता. बेवकूफ नहीं बना दिया. हाँ वही तो फर्जी डाला है. Alright, हानू with rocket launcher finally try करने मिलेगा. RPG in HSR. Let's go baby. Yeah. क्योंकि बटॉस्की वाली थोड़ी सी फीलिंग आती है मेरे को. सड़ी क्या? उड़ा दिया देखा मैं सड़ी वाले को. उड़ा दिया मैं सड़ी के. Mister, is that you? I hear the sound of leather shoes.
कितनी बड़ी जगह है यार, ये काफी ज्यादा बड़ी है, बड़ा एरिया। Stream 4, gleam of old blades. Make a wish. Feeling lucky. Stream 4, gleam of old blades. Set alarm. Set alarm. I hate alarm. For real. It's on me. I weep for the departed. It too shall fall. On the still waters of oblivion. Enemy targets. Again. All in. Sure, I'll play along. Not bad. 20k का. The dice have been cast. Bust. Or maybe I'll take it all. Watch your head. Enemy data secure. 10k का follow up. Netmarkers activated. ठीक है. Time for a good हमारा attack. सीन Destined for oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. यार एवेंचरिन अच्छा लग रहा है यार, सही में एक्चुअली में उसका This is what exploring the cosmos looks like a good shielder. एवेंचरिन Acheron का कॉम्बो बढ़िया लग रहा है. It really is you. I don't know why, mister, but you always give me a special feeling that makes me more curious about you. It's sad that I can't get to know you more. We have to say goodbye. Did you have fun? You're going back? मुझे लग रहा है कि मुझे एवेंचरिन पुल करना चाहिए. अगर तुम्हारे पास 2 सस्टेन नहीं तो पुल करो एवेंचरिन एट ऑल कॉस्ट. If you don't have to sustain, get एवेंचरिन. Your home. Where is it? What a strange question. It's where Papa, Mama, and Big Sis are. In this dream. सस्टेन मतलब जो हील करते हैं हो या सस्टेन, दोनों ही कंसीडर होंगे. हील एंड सील्डर दोनों ही सस्टेन में काउंट होंगे. जो एनिमीज को स्लो कर करके उनकी टर्न ना आने दें वो भी सस्टेन में ही काउंट होंगे एक तरह से, क्योंकि वो एनिमीज को डिले कर रहे हैं. तो अगर उनकी एनिमीज की टर्न नहीं आएगी तो वो डैमेज कैसे देंगे, तो वो भी एक तरह से एज इन सस्टेन ही काउंट हो रहा है. तो वेल्ट काइंड ऑफ अ सस्टेन काउंट कर सकते हो तुम, बट उसका स्लो उतना बेहतरीन नहीं है. इमेजिनरी स्लो करने वाले कैरेक्टर्स, ठीक है, जो इंप्रेशन करे एनिमी स्लो कर सके. You do know, but there's no point pressing the issue. Admit it. You're tired. We all are, which is why we chose to stay here. फ्यूचर में आएगा, आई होपफुली फॉर श्योर. Your past. Your future. Damn, लाइट को ना ला फ्रेंड्स. You stay. Forever. We'll be with you forever in this dream. This is the greatest honor that we can offer to those who hurtle towards death. The road less traveled is less traveled for a reason.
gone in any other direction. Your own life is the chip you're most eager to lay down. Always has been. You don't care who the real murderer is, and the Watchmaker's so-called legacy couldn't be more boring. What you want, what you need, is to be the smooth operator, the solid gold deal maker who doesn't waste a drop of sweat, even when he's up to his neck in danger, deep inside family territory. You want to be polished up, cuffed with red-hot chains, and spotlit center stage. You'll be the closing act, the final sacrifice. I can do it. And it will be flawless. Of course you can. Your luck will help you at the right time. Stellaron and... इतना लेट आएगा वर्निंग लाइक बीटा वर्जन तो अवेलेबल करना चाहिए. बीटा वर्जन ऑलरेडी खत्म हो गए सारे बीटा भाई. दो बीटा हो गए, अब सीधे गेम रिलीज होगा. आई थिंक माई के एंड में होने रिलीज होगा जितना सुनने वाला है. And as for you, you'll just happen to slip the leash, leave the rat race, extract yourself from this endless debacle. You'll have the freedom you've always dreamed of. ऐसा लगा था एवेंचर स्टोरी क्वेस्ट चल रहा है. यप, एवेंचर का कोई स्टोरी क्वेस्ट नहीं आना चाहिए क्योंकि एवेंचर का स्टोरी क्वेस्ट तो हो ही गया लिटरली पूरा. This fiasco started with a death and its curtains will fall on another death. Oh. So that's why Diamond chose you. डायमंड आईपीसी का बंदा है. He's just after Penacony. No matter the means, no matter the price. It's not personal. It's hard, isn't it? Well, don't get soft on me now. What, did you suddenly grow a conscience? Hey, I was born from yourself. I'm well aware that climbing out of the... This is quest still going on, yes. मैं पूछ रहा चीज पुराना चीज का बात कर रहा था, पता नहीं. I can't stop you from doing what you want. We can't change where you want to go. Well, what's done can't be undone. All we can do is play the cards we're dealt and rake in as much time as possible. Yes, this quest is back. अबे पीपा कितना बचा होगा? तूने कर लिया ना पूरा? कितना बचा होगा बताइए जरा अभी से यहाँ से. अब शायद ओपल एंड कंड्रम भी हो गए शायद आईपीसी के अकॉर्डिंग टू माय स्टोर नॉलेज. हो सकते हैं. मोदने को उठा मैं. अबे तो मोदने को उठाया तो स्ट्रीम को खोल के बैठी. पीपो ने कर लिया पूरा. ऑफ कोर्स पीपो ने कर लिया पूरा. दो तीन घंटे बचे अभी. बचा काफी. बाप रे बाप. चेन को संडे ने हिप्नोटाइज कर रखा है. The trip was all about. Fine. Time to make a move, my friend. I'll be waiting up ahead. Say goodbye to the kid before you shuffle off. It's best to die without regrets. And now, only we are left. Can you take a photo for me? I want a memento.
Sure. Come on. I think we should leave it for today. No, I will not. Can you take a photo for me? I want a memento. फोटो खींचना है. Damn, bro is alone in there. Feels bad. How nice. Now I can see what I look like too. Look at the lens when you're taking a photo the next time. Your express. Sure, I will. I can't leave yet. I still have a show. Oh, you're about to go on stage, aren't you? Let's go then. I'll take you to the stage. Sure. So you're an actor. No wonder your clothes are so stylish. I'm actually a merchant. But I do have a show to do. Are you the same as those men? I can realize I'm checking at some part. Behind this curtain is the grand stage. It's almost time to go on stage. Are you ready? Good luck with your show. Thank you. You still seem pretty nervous. Let's put our palms together. And people who spoil the story now. अगर 50 मिनट का और रहता I think सही में? Okay. Okay Putting then. our palms together is a simple ritual. By putting our palms together and reciting the prayer to Mama Funga, she will bless us. If you're not familiar, It's all right. This is where we go our own way, Kakavasha. The catechins are coming. इनके सिस्टर को क्या यही मुझे जानना था फिर. Why? The catechins have already taken all our money, food, and they killed our parents. What more do they want? Catechins are bloodthirsty, cruel, and insatiably greedy. They want everything only to end up with nothing. This is a trick, an act of revenge. Remember? Today is the day of the Kakava, and also your birthday. They know the Avgin will surely hold a festival today. With the aid of this rain, they will come to destroy our wagons and take everything they want. Little do the catechins know, this time we will fight back. The men in black that descend from the skies are on our side. The catechins stand no chance against them, and will surely pay for their arrogance. Without this rain, the catechins would never take action, and we would not have the chance to turn the tide. This is a gift from Gayathra, and you are Kakavasha, whose good fortune will bless your sister with success. But people will die, and you will be in danger. How is that good fortune? Why are you all doing this? The Avgin always return their blood debts.
Gayatri calls for me, while Papa and Mama are waiting for me. I must answer the call. She will bless you with good fortune. I'm checking sister Lodge. As long as you are alive, Oh the my. Abjin will never run dry. So run, Kakavasha. Do not be afraid, and do not look back. Go to the other side of the mountain. The rain will accompany you, and the rain will bless you. As for us, we will reunite in Kakava's next aurora. May the goddess Gayatri close her eyes 3 times. Keep your blood eternally pulsing. Let your journey be forever peaceful. And your schemes forever concealed. Farewell, Kakavasha. Newsflash from the Inter-Astral Peace broadcast. The IPC Marketing Development Department spokesperson confirms that a small-scale rebellion has broken out in the unclaimed region of Sigonia. The situation is now under control. The insurgents are from a local clan known as Kataka, which has a long history of disdain towards the IPC. This has caused a serious negative impact to the work of the IPC's Marketing Development Department. The clan launched a massive attack on the Abjin, who were under the protection of the IPC, resulting in 6,728 deaths and 3,452 missing. The casualties are currently under the care of the frontline trauma team. The spokesperson expresses his deepest condolences for this devastating humanitarian disaster. At the same time, delivering an important message on this matter to all interplanetary citizens. का खात्मा कर पाए, I hope in future. The hammer of preservation will fall on all beings, regardless of life or death, regardless of race, regardless of ideology, to uphold the basic rights we inherently possess. Kakavasha? Oh, hi. Bye. Damn. Okay. All the actors are in place. This act is dedicated to you. I hope it'll be an unforgettable memory for you. Kakavasha. जेड आईपीसी, हाँ जेड आईपीसी की हेड है ना, pretty much. उसी ने एवेंचरिन को आईपीसी में लिया है. Do you truly want to destroy the world with your own hands? Let's assume, just assuming now, that every time I roll the dice, there's a possibility of achieving this particular outcome. Then I would be quite happy to make that wager. जादू. All right. अब यहाँ सीधे हम ओके Acheron के साथ हो गए मीटअप. Hello, I'm Himiko. The Astral Express is now. Hello, I'm March 7th. I'm sure she needs no introduction, as you definitely know her. Hey, I still do. You can call me Clocky. Why? Good. Yeah, right. Hello? None of you seem surprised by my arrival. Since Welt has decided to travel with you, it means that he trusts you. And we trust his judgment.
I envy your close friendships. Miss Acheron here doesn't present a danger, and she's of no threat to the Astral Express. Aventurine's prior accusation was based on nothing more than his own subjectivity. Which is why, before we continue working together, he has a duty to explain himself. मैं क्लॉक चूज करा था तो वहां से देख रही थी. You want to create a situation where all three parties are present? There must be some deeper meaning behind Aventurine's actions. I suspect he's been aware of Penacony's secret from the beginning and has been continuously strategizing to unveil it. In that sense, the Astral Express's role in his plans would be imperative. In the worst case scenario, he may use us to do something unexpected. Assuming things do escalate to that stage, having an extra ally is a good insurance policy. Penacony has numerous factions, and the state of affairs is significantly more intricate than that of Bellabog and the Xianzhou. But we must mete out justice for the dead. I am the boy. Oh my God! No shot. इन्होंने भाई Fate Unlimited Blade Wars का reference डाला. I am the bone of my breast. Acheron is my body. भाई ये रस को भेजूंगा मैं. भाई एक सेकंड. No shot. ये डायलॉग ओपी था. मेरे को नहीं समझा. तुमने एनिमे नहीं देखा. अगर फेट सीरीज नहीं देखी है तुमने एनिमे तो नहीं समझ आएगा. ये बहुत मैसिव रेफरेंस है. You're talking weird again, but it's a good vibe. जिसने भी एनिमे देखा वो समझ सकता है ये रेफरेंस. अनलिमिटेड ब्लेड मार्क में आर्चर का ये वो है ट्रेडमार्क लाइन है. वो बोलता जब वो अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स यूज करता अपनी. जहाँ गूगल कर लो समझ आएगा. Reached a consensus. Now, Miss Acheron? I will accompany you, of course. Let's move out then. But no need to rush. If he truly has laid a trap, he will definitely use every. Ladies and gentlemen, Leo. the most wondrous, most magnificent. The IPC cordially invites everyone. Look, should both the performers and spectators. Let's get going, everyone. Leo. I have a bad यार लोग बोल रहे हैं जेड फॉलो पिलेशन क्वांटम है. अरे आई एम डाउन फॉर एनीथिंग ब्रो. आईपीसी के सारे मेंबर फॉलो अप ही होंगे बाय द वे. अगर पीपा नहीं पता था आईपीसी के सारे मेंबर्स एज अ प्लेबल फॉलो अप कैरेक्टर्स होंगे. इफ यू डोंट नो तो पैस एवेंचर सब में फॉलो अप और रिलेटेड कुछ स्टफ होगा ही होगा चाहे किसी भी बात पे हो. ये है Mr. Yang. Why did you not tell your companions about my true identity? It's just like you said, an inability rather than an unwillingness. Plus, it's a long story, not something that can be summed up in a few words. लाइफ आईपीसी में फुल नहीं. लोफो जनरल जितने होंगे वो शायद इरोडेशन होंगे सारे. लोफो वाले जितने जनरल्स हैं ना वो सब जिंगन की तरह वो सारे के सारे इरोडेशन होंगे. नहीं इरोडेशन नहीं होंगे. सारे के सारे सामान यूज करेंगे अपने. जैसे लाइटनिंग लॉर्ड है जिंगन के पास वैसे ही अगर कोई दूसरा आएगा जनरल ठीक है जिंगन की तरह वो भी एक सामान ही यूज करेगा. सब सामान यूज करेंगे.
ऐसे चले ऐसे किट ऐसे आ रहेंगे सबकी स्टोरी ओरिएंटेड किट रहेंगी इस गेम में काफी कैरेक्टर्स को. In the upcoming confrontation, if the odds aren't in the Astral Express's favor, I will stand with you, if my meager strength is required. Acheron के बॉस पे लाइटनिंग वीकनेस है कि नहीं? Again. By the way. Aventurine actually chose a really conspicuous location. That guy's really taking it to a whole new level. Does he really think he's a superstar or something? Not a soul in sight. The hounds drove out the visitors, and now their whereabouts are unknown too. Everyone, pay attention. The other party has obviously come prepared. Okay. Okay, ये म्यूजिक अच्छा लग रहा है सुनने में. Astral Express, you're late. And this, unsought guest. We've kept your appointment, Mr. Aventurine. It is customary to show yourself as well. I will, naturally. But before that, I've got to introduce our guest of honor. Everyone, give it up for Miss Stellaron! Miss Stellaron? What the? Mommy, look, I'm on TV. March का reaction देखो. Let me remind you that in all likelihood, this stage and her identity have nothing to do with the wanted murder. Oh my, HSR dubs hilarious है भाई dialogue लिखने के मामले में. They know what to put here. Of course they do. Otherwise, why would I work so hard to gain your trust and then invite you all here? Because she's the only one who saw all 3 homicides. She is the key to proving that the family's death does not exist in Train's promise is nothing but a sham. 3 homicides? That's right, madam. The 3rd one is about to happen right now, right here, in Clock Studios theme park. A truly grand death. You, and you. All of you are going to die. And it's all because of you, Miss Stellaron. You will become the personification of death. You sure you're gonna survive this? Oh, don't underestimate the preservation. The cornerstone of the Amber Lord will surely guide me. Let me be a little clearer. I will detonate the Stellaron in you and cause a teeny, tiny accident on Penacony. Bam! The entire theme park will be reduced to a shattered dream. Then, before the family can even react, I'll become the IPC fleet's navigator. Your bluff isn't fooling anyone. If you could really do that, you would have done so earlier. You wanna bet? Sure. I'll bet with you.
I'm betting that it'll be a sweeping victory for me. By detonating an unprecedented explosion to prove that the vow of harmony is a complete and utter joke. You won't do it. Of course I can. It's just another gamble. I came from the wastelands of Sigonia. For just 60 red copper coins, people paid to brand me. Put me in chains. Place me in the gallows and bury me in the Golden Sands. But the sun could not kill me, and the quicksand sent me back to the embrace of the Guild and the IPC. Bear in mind, my victory was अच्छे नहीं भुला मकसद क्या Acheron को आएगा उसका मकसद यार जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी को Have you ever heard the saying, sleep is the rehearsal of death? Why do the living sleep? Oh, because we are not ready for the final rest. Every night is practice for the end. You and I are escaping into our dreams for fear of death at this very moment. And death will surface in our dreams. Friends, the game has commenced, and you cannot choose to decline. Nor do you have any reason or grounds to. The dice are cast. Okay, Sunday का Ladies Raven. and gentlemen, ready to unveil your cards. The architect's flawed stone. Of no value at all. I'm putting down the bet. I'm taking the gamble. I'm claiming the win. Oh, and fate spin the wheel. A daring gamble. Walking the brink of death for rebirth. He used the cornerstone. For the Emperor Lord! All right. Let's see who has the last laugh. Let the game begin! Ill fate descend! Down from above. Fusion की फील्ड नहीं एक्टिव है fuck. I see through you. Together as one. Free will over still waters of oblivion. I weep for the departed. It too shall fall. Destiny isn't sure. इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्टर्स है. No wind weakness, इफेक्टर्स बहुत ज़्यादा है इस पे. He has how much effectors भाई एक सेकंड. इमेजिनरी रेजिस्टेंस है और कंट्रोल इफेक्टर्स है. बहुत इफेक्टर्स है. मेरी वो इफेक्ट नहीं अप्लाई कर पा रही है. और 3 कैरेक्टर सीसी हो गए मेरे. गैम्बल टाइप वाला म्यूजिक चल रहा है एकदम. करना क्या था इस पे? Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Ill tidings manifest. I weep for the departed. It too shall fall. Prepare for something. बाप रे बहुत डैमेज दे रहा है तो. मेरी फ्यूजन कितना डैमेज दे देती है डिवाइस ने. बहुत डैमेज दे रही है. They'll keep throwing money on the table. The chance. The potential is what you hang on to. That's what justifies the gamble.
ये एनर्जी भी सक करता है। जब वो ये वाला अटैक किस चुटकी बजा के एनर्जी कम हो गई कैरेक्टर्स की। Another journey begins. Still waters of oblivion. I see through you. Converge and awaken. Destiny isn't chosen. Memories are beneath the water lies an endless abyss. मरा कोई मरी फ्यूजन लगा। ओ भाई बच गई। Memories are beneath the water lies an endless abyss. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. I weep for the departed. It too shall fall. मेरी भाव कितना डैमेज दे रहा ये। पहला तो लिटरली मौत मरने वाली है समझ लो। Free will destined for oblivion. पहला तो मर गई भाई समझ लो। I weep for the अरे fuck all twisted. It too shall fall. Destiny isn't chosen. Ill tidings manifest. Ready for another? मैं मरूंगा लग रहा है। सिल्वर वुल्फ लानी चाहिए थी। सिल्वर वुल्फ लानी चाहिए थी आई थिंक। All things in the kingdom creations. सिल्वर वुल्फ लानी चाहिए थी पहला की जगह। Yin and yang. Another journey begins. Still waters of oblivion. अब मरा कौन मरेगा? I weep for the departed. It too shall fall. भाई एक अच्छी बची समझ लो। Down to the last player. So why can't I be happy too? Why can't I feel that free? ये मैं कॉकी ऑल्ट। Always hide your ace with a straight face. I'm starting to get a little impatient with you all. Friends, to fully relish this, I'm betting every last chip. Only by casting aside reason does one truly gamble. गिलगामेश वाली ऑल्ट यूज कर दी इसने। बैबिलॉन वाली। Emanator, I know you'll match my wager, right? You're leaving? All right. Perhaps. I might pass through the place you mentioned. Penacony. What do you hope to find within a dream? I'm not looking for anything. They aren't in a dream. I'm afraid the family will not open the doors for you. Why? Because the path you walk is not accepted by the Harmony. Even if that's not what I want. Precisely because it's not what you want. Because they are not like other eons. They have never glanced at anyone, and they never need to. They leave woven strands of fate for humans to walk, and together, they weave a great shadow. And this shadow silently envelops them. There are always those who rise from the shadows. Arise. They mostly become a part of the shadow. In your eyes, am I the same?
You still have a strand of color, but not much. That is enough. Before they vanish completely, I will reach the Nihility's end. Right. So it Acheron. Throw it. Oh, music. I wish to mourn the departed, weeping like rain, to swell the crimson stream. Music. As the tide arrives, leading you back home. What's that? Is it deleted? बाप रे बाप म्यूजिक के साथ वो स्लैश बेबी What is this place? A gigantic black hole. And see, have I succeeded? Did I eventually die? Welcome to this sad world, Kakavasha. Oh my god. No shot. Bro. भाई इंटरस्टेलर ब्रो भाई ब्लैक होल के कितना ऐसे ओ भाई You came out alive after 2 days. It proves that This is way too dang. the real deal. Wealth, status, power. The IPC will give you whatever you want. As for us, we will reunite in Kakava's next Aurora. It's a pity this is not the place you were expecting. Melody, is it? Perhaps to you, I am just an emanator who's hiding her identity. But the sleeping and shapeless never glance at anyone. They have no face, no form, and even less of a will to speak. The Nihility envelops everyone. Now, America's Nihility is the destroyer of all worlds. It consumes. Farther, tainting themselves with more Nihility. That's all. That's all. My friend, you really leave me at a loss for words. So, is this my final destination? The land of the dead? This is all but a fleeting dream. One of the thousands of manifestations of IX. IX? Under the watchful eye of Nihility, we momentarily linger here before moving on to our own paths. It seems that my death has already been determined. Even if you wish for it, I can't promise you anything. Now that you've accomplished your goal, I think you can be a little more forthcoming. What do you mean? Your performance at the theme park was wonderful and grandiose. A simple yet practical technique that fooled almost everyone. No one would have ever thought that you would have gone to such lengths, even staking your life just to prove a fact that had seemingly been disproved long ago.
Real death does not exist in Penacony's dreamscape. Oh. Why would I do this? Because this is the only way you can uncover a secret that is even more unspeakable than the serial murders. To use this dream death to get there. To that promised land people constantly seek in this grand gathering. Penacony. The legacy of the Watchmaker. The true land of exile. How did you find out? I never imagined that something I learned about unexpectedly would become the key to connecting everything. It's our Stellaron friend's identity, isn't it? I see you're in the know. Let's just say I'd put money on the possibility. The murder isn't nearly enough to disrupt business as usual. Even if there were 1 or 2 murders on Penacony, most people wouldn't be personally affected. And that won't create any waves. This dream of theirs isn't a boundless sea. It's a lonely island. The family used the Harmony to build a high wall and isolate them from the vast and treacherous ocean of the outside world. That barrier they built keeps death out, but it also keeps the secrets that are lost in that watery abyss from floating to the surface. In a beautiful dream, free of suffering, who would want to go fishing for those secrets? No one. Unless someone goes to the other side of the barrier and lives to tell the tale. Someone already has. I got the idea early on, chewing on that masked fool's little hint. If a mute isn't someone who cannot make a sound, then it has to be someone who cannot speak. Someone who survived the treacherous depths, but is unable to take the stage and speak the truth. Well, I'm happy to know she's safe and sound, and still on Penacony. Hint. Is that not proof? Well, proof is the one thing I don't have. The only thing that can prove these conjectures is for the family to come clean. And with the way they buttered up these outsiders, it seems pretty clear they're intent on covering their tracks. But you don't need proof to have a suspicion. And for me, suspicion is enough. Hotel BC क्या करेगा Acheron का? I hope he is a god level strong. I hope he gives her a bit. अभी एवेंचरिन को इतने कुकुर की तरह डिलीट किया एवेंचरिन को, हैं? Literally one shot हो गया बेचारा. Very confident to me. Going out of your way to One shot हो गया एवेंचरिन अभी. तुमको लग रहा है कि बोट की कुछ करेगा? You are simply betting on the possibility of someone being able to break down the barrier. You're very lucky that fate has decided to let us cross paths. I happen to be equipped with a very sharp blade, sharp enough to slice through the veil of dreams. I can also carve the Harmony's brand off of you. You possess great cunning, deliberately setting us up to be on opposing sides, constantly repeating the words of the Emanator in front of others, leaving me no choice but to draw my blade against you. And that's how you win. Opportunity and strategy, both are essential. होटल भी एमिनेटर है एक तरह से हंट का ऐसा क्या? The IPC always wins, even if you lose the bet. To the family, the life of an ambassador is still invaluable. Well, it's a huge gamble, isn't it? But allow me to point out a mistake. The IPC's success is not guaranteed. I, unfortunately, have no contingencies for such an important matter. Detonating a Stellaron. I can't do it. The Aventurine Stone is too broken to even safeguard my escape from the stage. If, at the end of the day, you did not unsheath your blade, I would have lost the bet. It is pointless to discuss what-ifs. You have won. Your prize is an entry ticket into that deep sea.
And after this, whether you can return from the abyss is another gamble of Abyss. Genshin yours. Have you reference. never wavered? Wavered? Of course I have. But I can only bank on my own good fortune. Because other than that, I have nothing. Means जो hunt pass related हो. नहीं एमनेटर From this dream and go to where you तुमको should एक हॉयवर्स ने डाला था कि एमनेटर क्या होते हैं. डेटा बैंक में जाकर पढ़ना है एमनेटर कौन होते हैं, मीनिंग दिया हुआ उसमें. अरे फक मैं वो लाइन फक क्या पढ़ने आया. Before we part, can you answer one more question? As someone who has traveled on that road, can you tell me, why are we born into this world? Oh, no. If it's just to die. I don't think this and never have. Nor do you. But the nihility envelops you and I. And everyone. And because of that, it's pointless. जिंगन हंट का जिंगन एमिनेटर नहीं है. व्हाट? नो. व्हाट? जिंगन एमिनेटर नहीं है. कौन सा नशा है भाई? Always waited. Then that is our destiny. जाके रीड करो कुछ चीजें. जिंगन एमिनेटर नहीं है. Do we struggle against it? My answer might not be able to resolve your confusion, because it has been with you throughout your journey and is already a part of your life. But you said sleep is the rehearsal of death. So why does life sleep? Because we are not ready to welcome death. So you can definitely understand. हारता शायद है. हारता का मेन फॉर्म. हारता का 4-स्टार वर्जन नहीं, क्योंकि जो 4-स्टार है वो रियल वर्जन नहीं, वो पपेट है. रियल हारता कहीं और है जो कंट्रोल कर रही है अपने पपेट्स को. तो अभी रियल हारता जो आएगी वो एमिनेटर हो सकती है. And because of this, the end will thus reveal a completely different meaning. Take a good look at your pocket. Your friend has already given you the answer. Good luck. ओह हाँ, डॉक्टर रेसी ने स्क्रॉल दिया था इसको. The impossible in the dreamscape is not that, but rather dormancy. Do stay alive. I wish you the best luck. Dormancy क्या होता है? What's a dormancy? Then I What? Oh shit, it's him. Mister, Oh no. you're leaving? You ultimately chose to leave this dreamscape. Yes. Because they are not here. My papa, mama, and big sis. Then where are they? They are in a place where everyone will go. A very, very distant place. Then are you going to? I'll get there one day. But not now. There will come a day when the sky will drizzle, and I will hear the call of Gaiathra Triclops, and know that it is time for me to go, and be reunited with my family. So, until that time comes, I should be preparing. Preparing for what? Well, preparing to face them, Kakavasha, and to make them proud. I know you'll be able to Development growth is stopped or slowed. Good luck. Well, of course. For I am a child who received the blessing of Gaiathra Triclops. But you still seem nervous.
Well, I seem that way because I am nervous. You know what? Maybe you can help. What do you say? One last time? Put our palms together? Are you going now? Yes. May the Mother Goddess thrice close her eyes for you, keeping your blood eternally pulsing. May your journey be forever peaceful, and your schemes forever concealed. Our paths will cross again beneath Kakava's shimmering auroras. Farewell, Kakavasha. With hope for the morrow nestled in my heart, I descended into the slumber of tonight. Until the denouement of all coming marrows kisses me, I have then embraced the quiet death. But this man is different. He lives and breathes the present. In every sinking night, by every daring gamble, no vision of morrow ever graced his dreams. His life knows no quietude. His fate yet demands him to win them all, to weather tempests one after another, till mire enshrouds his very breath. Now, in the unfathomable depths of dream, the once falling die has last landed on its earthly rest, quietly, peacefully. It at last landed. The light of the Aventurine Stone has disappeared. Aventurine is dead? मुझे लगा कि बच जाएगा. Only represents one. He kept his promise. And got what he wanted. As planned, your cornerstone has been successfully sent to the family's territory. Then... Let's fulfill our duty and start harvesting. Therefore, in the cradle of slumbers, deep within the sweet dream of the planet of festivities, and the stone begins to radiate light. I come for an audience. I come to fill wine, and I come to claim. I bestow poison. It was all a plan. Aventurine को मरना ही था. Come the toil of spring and yield a fall. I patiently wait for the branches to be heavy with withered fruits. All for the Amber Lord. So you wanted death? Yes. Mila memory zone depth. You try to open your eyes, but find only blackness before you. Where is this? What happened? And whose beer is this? अबे भाई ये लोग डायलॉग ऐसे डालते हैं. Memories gradually resurface as time rewinds to a few minutes ago. Aventurine unleashes his final assault, pouring down a dazzling shower of chips, followed closely by Acheron, drawing her blade, and then the indescribable force savors the power of preservation, while time and space froze instantly. Your thought twists into a knot as your senses fade, with only gravity tearing at your mind as you plummet into boundless darkness, until a fire engulfs you in its embrace. Yes, I'm Dagger. I think someone saved me. It doesn't matter, I need to get out of here. Okay. You're awake. Oh, Sam! I've been waiting on you for quite a while. Samassi is back. It's you. What have you done? I didn't do anything but wait for you to wake up. I originally planned on showing up earlier to reveal some, but I encountered more roadblocks than expected. 11 times I've tried, but ended in failure. Before I knew it, this world and I became too intertwined.
and it became too difficult to escape the constraints of the script. What the fucking script? Actually acting. Elio is right. In this land of the dreams, you and I will reap unforgettable gains. I don't know people's hearts as well as he and Kafka do. Nor do I have a specialty like Silverwolf and Blade. Most of the things that I'm good at only apply to villains who need no mercy. So, there is only one method that I use. This is to show you. Firefly! Oh my god! Firefly! Sam was always a waifu! Oh! All that I am. But, what's with the face? Alright, Sam was a waifu. This whole time he was the waifu. And halls, alright, baby. Traps everywhere. The owner of this mansion must be a bit paranoid. Yes, I mean it भी बहुत obvious था, पता है already सबने figure out कर लिया था कि Sammy Firefly बहुत ही obvious है ये. खराब कर दिया मेरे लिए गिगा चाइल्ड रोबो की जगह confused तो सुन रहे आ बच्ची कौन मर गया? Acheron, he died. Acheron ने उसको उड़ा दिया, one shot कर दिया सीधे. Sam वाइफ निकला भाई, let's go. Main account निकालूंगा मैं. E2S1 Sam. Best will only make me more suspicious Sam that must see. you and the real serial killer are connected. Alright, Gallagher. Spill the beans, bro. I know you. Punk, drunk, hooligan. I have heard this trash talk all too often. But I have never once thought that I'd be treated as an accomplice to a murderer. I take back what I said. Your problem isn't paranoia. You're just crazy, you know? Lunatic. You, the family, you broke my spine and pulled out my fangs, and now you want to accuse me of murder? Ridiculous. Only idiots who've drunk too much Soul Glad will berate a stray dog in the streets. Lol. What exactly is making you say all this nonsense? You should be more concerned about the Outworld visitors who are making a scene in the theme park than me. I don't need you to remind me. Once that ambassador walks through the doors of the mansion, I will know what he wants. My servants see everything. His little magic tricks may have fooled me, but no matter. I'm happy to see how it's turned out. Why do you think that I just let him go? And why do you think I emptied the theme park stage? Because my target from the beginning has always been you, Hound. The more noise he makes, the more opportunities I have to make you and your true master pay in blood. Oh, wait, he works for the watchmaker? Really why would you need to be so secretive? Ha, I forgot. You also have a difficult master to serve, telling you to ignore the murder case and focus solely on that Charmony festival. Isn't that right, my brother? Looks like your disguise has helped you successfully understand every facet of the family. Disguise? You must be blind to be accusing me of being a fake. Open your eyes and take a good look. Indeed, every part of you is real. The brown hair, soft and curly like Benny's. The orange eyes. Dreamscape producer. Oh, Bennett Dreamscape का producer. What? That odd scar. Head of Nightingale. The mark of Woolsey. And the gray vest, tie, hound emblem, bottle, the bartending, and your role as a security officer. These are all true traits. From all 52 loyal family members. When they are gathered, countless tiny truths are woven together into a lie. You collected a small piece of each of them
and claimed them for yourself. Then you invented this facade. A complete Gallagher. Tell me I'm wrong. You have guts, I'll give you that. Not bad. I severely underestimated you. Admirable. But so what? Can this prove that I murdered your sister and that stowaway? This proves that you and the Memory Zone meme death are linked. And that's enough. Wait. Listen up. I don't care how you did it. I only care about one thing. The answer to a question. You devil. You wretched, despicable dog. Gallagher Memory Zone meme hai? Kill her. No shot. You know, in the thick of things, people are blind to the grit in their eyes. Yet they can always feel it scratch. Want the answer? I'll give it to you. The whole thing is just fate playing a cruel joke on us. Oh! Sunday ko मार दिया. What? अरे भाई क्लिफ हैंगर पे फिर से क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया भाई. फिर से क्लिफ हैंगर पे. हद है भाई. Welcome to the interesting. चोरी ये 4 स्टार कैरेक्टर भूसड़ी का मेमोरी जोन मीम है. जाके सो आप. He reminds me of the Odes of Harmony. But I caught a whiff of something behind the facade he puts on. Something real. अबे फिर से भाई संडे को मार दिया. अबे भाई संडे ही मर गया. एवेंचरिन मर गया. अरे ये भाई कौन लिख रहा है? अबे राइटर क्या गया खुदामी है क्या भयंकर? लेफ्ट राइट पे ले दे रहा है जिसको भी दिख रहा है. What the fuck? Noise. अबे भाई क्या क्लिफ हैंगर पे छोड़ा है भाई यार. बहुत गांडू बना लगता है मुझे जब ये क्लिफ हैंगर. आई हेट क्लिफ हैंगर्स ब्रो. ये व्हाट द फक इज दिस? हेलो. So he got access to do shit with the dreams girl, so he connected. क्या लगा ओरिजिनली फैमिली मेंबर से है. संडे ट्रेटर फैमिली को फॉलो करता है. एक्सपेक्टेड था. चैट ऊपर है. एक्चुअली जिंदा ही है डैगर. ये मर गया लगता है मुझे. तो मुझे लग रहा है एंचुरिन इज डेड. हीलर का है और सबको मारता फिर रहा है भाई. हीलर और सबको पेशे दे रहा है लेफ्ट राइट. पढ़ ली दो चाट. हाँ पढ़ ली यार. E3 करूं कि नहीं Acheron सोच पड़ा हूं. E3 करूं कि नहीं Acheron. स्टिल थिंकिंग. रीरन पे E6 Acheron क्या बोलते हो? बट गैलागर है कौन? मेमोरी जोन मीम. मेमोरी जोन मीम भाई. This is Gallagher. This is Gallagher. मैं सच बोलूं तो मुझे लगा था मीशा होगा
ठीक है, बट भैंसड़ी का साला एक गैलागार एनपीसी मारा। हैकरों का स्टोरी देखना था पर एवेंचरिन का देखा। हाँ रेशियो का टोपैज जैसा जोसेफ और एक्रोन। अब यार नेक्स्ट, अरे यार तो टू बी आई हेट टू बी कंटिन्यूड ब्रो, फक हेल ब्रो। एक तो 2.3 तक क्वेस्ट चलेगी, क्वेस्ट एक तो 2.3 तक चलेगी, 2.2 में भी आएगी, फिर 2.3 में भी आएगी। इतनी बड़ी तो मेन स्टोरी है इसकी पैनिकनी की। आई मीन हाँ, काफी चीजें हैं जो आंसर नहीं किया अभी तक, काफी सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, पता है अभी क्वेस्ट में। cat among pigeons। एवेंचरिन की साइड, एक्रॉन की साइड, ये एवेंचरिन का पर्सपेक्टिव पूरा यहां तक चलता है, ट्रेल ब्लेजर का, और सब आके फिर एंड में यहां मिलता है। भाई क्या सेक्सी कट सीन था भाई एक्रॉन वाला। ये जो पिक्चर थी ना यहाँ पर, जब बारिश हो रही होती है, एक्रॉन अपनी ब्लेड सीथ कर रही थी, ये लाइव वॉलपेपर में कितना अच्छा लगेगा नहीं। Hey. एग्जाम फार्मल का होना, सेकंड एवेंचरिन का क्या हुआ, थर्ड संडे के बारे में देखना, और वो मीम। हाँ अभी भाई ओके, मैं ये समझ रहा हूँ कि संडे के सामने उसने अपने आप को रिवील कर दिया, ठीक है, बट किलिंग हिम, मार भी दिया। अबे दोनों भाई बहन मर गए बच्चों। दोनों भाई बहन मर गए भाई, द फक। Oh no, Robin. Who the heck is this? इतनी ना करो, सैम के साथ जो है एक्रॉन का मस्ट है, अगर जेड ना आया देख लेंगे। अभी मेरे को वो भी निकालना है ना, दो पुल और यार मन कर रहा बड़ा। चलो E3 नहीं करूंगा, बट सामान करने वाली खुजली हो रही है सामान करने की। Bad gotcha. ओ भाई गोल्डन बन गया, स्टैचू चेंज हो गया। दो 200 जेम्स। ये कौन सी लाइट कौन है? अच्छा हारमोनी वाली। 35 लेवल तक है स्टैचू। कितने पिट हुआ? आई थिंक 60 की 50 की पिटी है अभी तो।
बस 60 तक पीटी बिल्ड करूंगा, बस 60 तक, 60 से ऊपर नहीं जाऊँ, 60 से ऊपर नहीं, 60 के ऊपर नहीं जाऊँ। सिक्सटी के ऊपर नहीं, ओके 60 के ऊपर नहीं। एक चेस्ट मिल खोल लेते हैं कहीं पर चल के। कौन सा है पता नहीं, कौन सा कैलिक्स है। एक चैट पढ़ कर वही चार होता है। 2.2 इज एंड गेम एंड 2.3 इज रैप अप। 2.4 आईपीसी, 2.2 इज लूफो जनरल की सेप। 2.6 सम सेट रिलेटेड टू जिंगलो लुवोचा वेल्ट मेरा स्पेकुलेशन। अरे हाँ, लूफो की भी तो स्टोरी का वो करनी है लोगों का कंटिन्यू, तो भूल ही गया। Don't forget to let your friends in on the action. Boss, the actors are on strike again. Seek, and you will find. बोलो मत, सैम्पो अपना मास्क लेके गया है। मेरे को कुछ टेस्ट भी करना था, जरा आओ टेस्ट करते हैं जरा। फायर ट्रिल ब्लेजर ट्राई करना था मेरे को। एक्रोमेट टीम में सैम्पो ज्यादा सही है रहेगा या सिल्वर वुल्फ? ऑफ कोर्स सिल्वर वुल्फ, दैट्स नॉट इवन अ क्वेश्चन। व्हाट? सैम्पो इज लिटरली लाइक वे टू मिड टू प्ले विद एक्रोन। यो Do you want to enter the... ट्रिल ब्लेजर पे लगाते हैं लाइकॉन याली, लगाते हैं जेपार्ड के आर्टिफैक्ट। ट्रेल ब्लेजर को तो ईआर रोप की नहीं, डिफेंस रोप की जरूरत होती है शायद। ट्रेल ब्लेजर ऑल्ट तो स्पैम करता नहीं, बड़ी मच डेफ रोप यूज करेगा ना वो तो। फोर के डिफेंस ट्रेल ब्लेजर 35.0 इफेक्ट रेज। ऑलराइट, फ्यूजन रिमूव करो, ट्रेल ब्लेजर को डालो, ठीक है। I just completed the story same. Acheron टीम में सैम्पो I guess विद्याधरा हो गई DHL जैसी। Imagine being विद्याधरा and general blessed by fucking hunt. Will of preservation. I forgot order line. Universal trend. Yep, I forgot about that. Enemy targets detected. Ready for another? अबे गांडू ने Acheron को दिया। I weep for the departed. Okay, let's go back and universal trend लगा के आते हैं। मैं भूल गया universal trend के बारे में। भाई कितना डिफेंस कम हो गया, 3.4 के हो गया डिफेंस पूरा गिर के। एवेंचर बॉस क्या बेकार है? एवेंचर बॉस क्या बेकार मतलब समझा नहीं।
trickier to crack. Time for a buzz. Lance ablaze! Lance forward! I weep for the departed. It too shall fall. 446k without any depth rate. 456k. What? Enemy data secure. Network activated. Time for a good old counterattack. This combat needs optimizing. This is double speed. It's time. Free will, or was it fate? Still waters of oblivion. Ooh, 134k alt भाई. स्किल मारी 134k की Acheron ने. बहुत बिग डैमेज आने वाला है. 5 लाख. Can I have fun this time? Time for a buzz. Ready for another? Another journey begins. Destined for oblivion. On my command. Perform. This combat needs optimizing. This is double speed. इतो कर दिया क्या अभी? इधर है ये. E2S1. Commencing support. Enemy data secure. Network activated. Time for देखो अब कितना बिग पीपी डैमेज आने वाला है. Just watch. I weep for the departed. 66 CR enemies. हुआ जवान करके डिफेंस रेड. भाई. अब देखना डैमेज. Just watch. दूसरे हिट में. ओ अरे कम मारी से यार पर. Lance ablaze! Lance forward! Free will, or was it still waters of oblivion? You took the bait. Okay. Ready for another? Bro, Trailblazer kind of insane है. Acheron सा. Who's and who? Trailblazer OP. Trailblazer का सस्टेन. ओ भाई. Trailblazer का सस्ट. ओ भाई. ये सस्टेन नहीं कर पाया. करवा तो दिया उसने. जेपार्ड बिल्ड है. हाँ जेपार्ड बिल्ड है मेरे पास. ट्रेलब्लेजर के पास स्किल है ना. ट्रेलब्लेजर स्किन से टॉन्ट करता है ना और वो डीबफ होता है. टॉन्ट इज अ डीबफ. ये जो ये है ना ये स्किल पे ये जो टॉन्ट है. टॉन्ट डीबफ होता है ना. तो ये Acheron की ऑल्ट जल्दी लाने में काम करता है. देख नहीं रहते Acheron की ऑल्ट कितनी जल्दी आती है. जेपार्ड ये नहीं कर सकता. टॉन्ट इज अ डीबफ. 0 साइकिल ट्राई करो. 0 साइकिल नहीं हो पाएगा. उसके लिए तुमको ऑल्ट बहुत तेजी में ला रही है. E2S1 से 0 साइकिल कर सकता हूं. बिना E2S1 के नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से. आई थिंक रिलैक्स वन चलाते हैं जरा. ठीक है. ऊपर से ट्रेलब्लेजर जब टॉन्ट करता है तो एनिमीज का वो एग्रो अपने पे लेता है. अब एनिमीज जाके उसको हिट करेंगे. ठीक है. तो उस पे लगी है ट्रेंड एलसी. ट्रेंड वाली एलसी से वो डीबफ लेंगे अपने ऊपर और एक्स्ट्रा डीबफ. तो ट्रेलब्लेजर समझ रहे हो कितना ओपी है. टॉन्ट कितना ओपी है यूनिवर्सल ट्रेंड एलसी के साथ. Will of preservation. Make a wish. Stream forth. Gleam of old blades. Elusive vortex. Ill fate is dead. Enemy targets detected. I weep for the departed. It too shall fall. Not a scratch. Still waters of oblivion. Lance at the ready. Memories are beneath the water lies an endless abyss.
Lance ablaze. Lance forward. I weep for the departed. It too shall fall. सी कैसे Acheron को स्टैक्स मिल रहे हैं ट्रेल ब्लेजर के टॉन्ट की वजह से। ट्रेल ब्लेजर पिट रहा है और Acheron को स्टैक्स दे रहा है वो फुल ऑन। Another journey begins, destined for oblivion. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. वेल अभी एक बार ट्राई करना, देखना कितना डैमेज डाल देता। It too shall fall. भाई कितना मार रहे हैं ये उसको। Still waters of oblivion. Destiny isn't chosen. Enemy data secure. Net markers activated. Time for a good आफ्टर में अर्जेंटी का डैमेज और मेन अकाउंट में Acheron का डैमेज। अर्जेंटी हार्ड पावर क्रीप होता है इससे इन टर्म्स ऑफ डैमेज। एज एन बर्स्ट डीपीएस एवेंचुरी नहीं। अरे अर्जेंटी इज जस्ट Acheron खेल लोगे ना फॉर F2P टीम। आई थिंक Acheron इज जस्ट फार बेटर। एवेंचुरी अर्जेंटी Acheron से भी ज्यादा बैकलोडेड है, काफी ज्यादा। मुझे सिल्वर वुल्फ ज्यादा पसंद आई। आई थिंक आई लाइक सिल्वर वुल्फ हियर और बताओ ये देख रहे बवासीर देख रहे हो। एह भाई यार कम ऑन। अरे यार को बे एक रन कर लेते हैं, लाइट को लेवल अप कर लेते हैं। आराम ही गेम। लॉल बेस्ट टीम नहीं खेली आपने कभी? अच्छा कौन सी बेस्ट टीम बताओ जरा मेरे को। अर्जेंटीना बेस्ट टीम बताओ, करंट बेस्ट टीम बताओ। I weep for the departed. It too shall fall. ill tidings manifest. Net markers activated. Time for a good old counterattack. हुआ स्पार्कल टिंग हुआ छोड़ के मेरे पास स्पार्कल टिंग दोनों है। अब क्या हुआ से कितना डिफरेंस पड़ेगा? हुआ कि ऑल्ट आने में भी हुआ कि ऑल्ट कॉस्ट इतनी हाई है कि उसकी ऑल्ट आने में दो साइकिल चले जाते हैं ऑल्ट आने में। हुआ की I weep for the departed. It too shall fall. स्पार्कल के साथ खेल लिया मैंने अर्जेंटीना। pretty much मैंने बेस्ट टीम खेल लिया है अर्जेंटीना की। फाइनली एक लाइट बनी हो गई लेवल अप। 3.2 का अटैक 5183। मेरे को लगता है नल्ला ही लगता है पर ताजिरों के अकाउंट में मैंने खेला है। वो अच्छा काम करती है, ऑफ कोर्स अच्छा काम करती है, बट इतना जमीन आसमान का फर्क थोड़ी हो जाएगा हुआ के होने और ना होने से। इतना जमीन आसमान का फर्क पड़ता है क्या? 50% अटैक बूस्ट मैटर करता है, आइस अग्री, बट वो ऑल्ट कॉस्ट भी तो उसकी 140 की है, वो आने में भी कितना टाइम लगता है वो भी तो सोचो। ये ऑल्ट आने में कितना टाइम लगता है पता है? और तुम हुआ कि स्किल भी नहीं स्पैम करते उतना।
गुड नाइट, स्लीप वेल। से फर्क बहुत पड़ता है सर। अच्छा, ई स्पैम एंड शेयर्ड फीलिंग एलसी। नो शॉप, आई मीन अगर स्पार्कल है तो हाँ, तुम हुआ वो ई स्पैम कर सकते हो। We need a strategy. Mm-mm. Stream 4. Gleam of old blades. अरे अरे रुको भाई, ऑटो क्यों चलने लगे? ले आता। I weep for the departed. It too shall fall. Free will, or was it still waters of oblivion? Time for a fun. This is double speed. Commencing support. Ready for another? Net markers activated. Time for a good old counter attack. How familiar. I weep for the departed. It too shall fall. You took the bait. Another journey begins. Destined for oblivion. Lance at the ready. More. अबे तुम जिंदा बच गए? बट ऐसे एक्रोन कितना डैमेज देगा? बहुत ज्यादा। आईसीएस एक्रोन बेस्ट डीपीएस कह सकते हो, वेल डीपीएस। आईसीएस एक्रोन बेस्ट वेल डीपीएस कह सकते हो pretty much। इसके बाद जेपी ट्रेंड पे ट्राई करना, कर लेगा। Trickier to crack. Time for a fun. अरे इस एक्रोन को क्यों हिट किया फिर से इसने? Still waters of oblivion. I weep for the departed. अबे स्किल करने से 9 स्लैश लगने चाहिए थे, लगे ही नहीं। It too shall fall. थोड़ा कम डैमेज दिया तो ब्रोकन है। बेस्ट E6 डीपीएस कह सकता है pretty much, yeah। Have fun this time. This combat needs up to. This is double speed. Lance ablaze. Lance forward. We have the upper hand. Something is wrong here. Something feels wrong. Will of preservation. Am I doing it wrong? Something. अपने अपने ओपिनियन, बाकी एक्रोन 3 लिया। Time for a fun. Ready for another? अच्छा, एक्रोन पे लाइट, एक्रोन पे जब लाइट कोन नहीं होता ना, एक्रोन का लाइट कोन का यही डिफरेंस है। हैं ब्रो? अभी ईटो भी निकल गया तुक्के में। ओह नॉइस वैभव। Don't lose my free will, or was it 7 है, ठीक है। अगर मैं स्किल करूंगा, क्रिप्सन नॉट लगाया कि नहीं एक्रोन ने? I weep for the departed. अब क्रिप्सन नॉट क्यों नहीं लग रही है? वीवा वो प्ले स्टोर अवेलेबल हो गया? हाँ प्ले स्टोर पे आ गया, देखा मैंने। वन
More enemies. The thing with Good Night Sleep LLC कि it ऐसे काम करती है for every debuff, ठीक है, the damage dealt will be increased by this every debuff और max 3, तो enemy पे जितने debuff होंगे उसी हिसाब से डैमेज होगा। 3 debuff इस पे 3 स्टैक के साथ डैमेज गया, इस पे एक ही debuff था तो इस पे एक बस 18% इसने डैमेज लिया, इन पे 2 है, इस पे 2 स्टैक गया, ऐसे है, समझ रहे हो? This combat needs up to. This is double speed. Ready for another? Network activate. Time for. नहीं लगती है ना 7 एक एनिमी पर लगी है, बाकी दूसरों पर इन पर डिबफ लगाया है आपने। स्पीड में रैंडम बट शुड गो या I'm on guard. Can I have fun this time? Commencing support. फायदा मैं 2 साइकिल कर रहा था, एक एनिमी को मेन टारगेट करो, समझ गया मैं, टारगेट बार बार स्विच करना इज बैड। आपसे इनफ डैमेज दे रही है। Storms on the horizon. Will of preservation. Stream 4. Gleam of old blade. मेरे आईडी में कौन कौन से 5 स्टार हैं, सुनोगे तो बोलोगे कि क्या कचरा जमा दिया है, क्या कचरा जमा रहे हो भाई। फिर Time for a buzz. Enemy targets detected. Enemy data secure. Network activate. Time for a good old counter. आका जा मोना चिची इटो, अरे बाप रे बाप, एक्चुअली मैं क्या कचरा जमा दिया। I weep for the departed. नौ स्टैक्स, अब आएगा डैमेज। हाँ जिनने सही बोला, 1 पे फोकस करो, 4 पे फोकस करने होगे तो दिक्कत है। Another journey begins. Still waters of oblivion. जिन सही बोल रहा है, एक ही एनिमी फोकस करना, कभी बार बार स्विच मत करना टारगेट एक्रन के साथ, This combat needs optimized. इट्स नॉट गुड। This is double speed. मैंने ध्यान दिया कि एक ही फोकस करना ज्यादा बेटर रहेगा। मैं आज लाइक अरे किसी फोकस करो, क्या फर्क पड़ता है। तो अफसर से एसआर का 14 बना हो, ठीक है भाई। Can I have fun this time? लिल, अरे बेसिक अटैक नहीं करना था, बट ठीक है। Ready for another? Lance ablaze. Lance forward. Free will or what destined for oblivion. On my command. Take cover. Again. Time for a buzz. Enemy targets detected. Enemy data secure. Network activate. Time for a good old counterattack. I weep for the departed. It too shall fall. Lance at the ready. Another journey begins. On still waters of oblivion. This ends here. This combat needs optimized. This is double speed. ये 1 साइकिल हो गया है तो pretty much 1 साइकिल हो गया नहीं। ओके बेसिक अटैक कर सकता हूँ। Ooh, I love that. I love that.
I weep for the departed. It too shall fall. Can I have fun this time? Destined for oblivion. Not gonna lie, this is not bad. Okay, this is not bad for real. Enemy data signet markers activate. Time for a good old counterattack. More enemies. This is not bad. This is not bad. Actually, मैं very good. Fate Samurai game try कर रहा हूँ. बहुत मस्त है. Fights are good. Noise. मैं तो अभी variety में फिर तो घोस्ट आना खेलने का प्लान है मेरा. I like this game. Not bad. Not bad. जरा जपाट ट्राई करते हैं वापस. Trailblazer is not bad. F2P team के लिए 3 साइकिल is good. हाँ, that was very good. Not bad. ठीक है. ग्वेनेफेन ट्राई करें क्या? एक बार ग्वेनेफेन ट्राई कर लेते हैं. ग्वेनेफेन ट्राई कर लेते हैं. सिल्वर वुल्फ हटा के 4 स्टार ग्वेनेफेन ट्राई के साथ ट्राई कर लेते हैं. ग्वेनेफेन ट्राई कर लेते हैं एक बार, एक राउंड. लाइट कौन लगानी पड़ेगी ना इफेक्ट ट्रेड के लिए. नहीं बट लगा लेते हैं. आ गया. $68 EHR with 2.8 का attack, 153 speed. चलो इसको हटाते हैं. ग्वेन को ट्राई करते हैं. फुल ऑन F2P गैंग. ओके, F2P गैंग, फुल F2P की गैंग टीम. Acheron, रिबॉली Acheron टीम. We need a strategy. Stream 4. Everyone's a customer. I weep for the departed. It too shall fall. वेट, वो मरा नहीं? अब मर गया. अब मरा. डिबफ लगाती है पता है, बट स्किल से डिबफ लगाने के लिए E4 चाहिए एक्चुअली में. यार गन को इतने वो कर दिया यार, काफी लो कर दिया. सर्वाइव भी नहीं कर पाई गन. मेरे को रिस्टार्ट करना भाई. Storms on the preservation. Stream 4. Gleam of old blades. Everyone's a customer. Enemy targets detected. इसको ब्रेक करना जरूरी है यार, नहीं तो ये साला एनर्जी खा जाता है हरामखोर. एक्स्ट्रा स्टैक नहीं लगा. व्हाट द फक. डिस्ट्रीब्यूट हो गया स्टैक लग रहा है. नहीं लगा. अच्छा, उस सब बगल में एक जो चूतिया उस पर चला गया स्टैक. एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ले गई एनर्जी. दैट इज नॉट लुकिंग गुड एक्चुअली. तो इनको अटैक बॉडी स्फीयर देते हैं. सिल्वर पे एचपी बिल्ड हो जाती. सिल्वर पे एचपी क्यों ले जाऊंगा मैं? सिल्वर वुल्फ मैंने EHR डाल रखा है. अबे भाई इसी तो मार रहा है भाई.
जापान को सरवाइव नहीं कर पाएगी, एक्रोन की टीम मर गई। ये मर क्यों रही है? एचपी स्फीयर? किसको एचपी स्फीयर? तूने एचपी लिखा है ना? Storms on the horizon. Will of preservation. Stream 4. Gleam of old blaze. Everyone's a customer. Destined for oblivion. ओके ना, 9 से ज्यादा स्टैक नहीं हो सकते हैं। I weep for the departed. तो सीन कुछ ऐसा है कि 9 से ज्यादा स्टैक नहीं हो सकते, ठीक है? वो 9 जो स्टैक होंगे वो किसी भी एनिमी पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ये जो एक स्टैक था ये इस पे चला गया है। It too shall fall. Enemy targets detected. Ready for another? I weep for the departed. It too shall fall. Turn out your pockets. Enemy data net markers activated. Time for मैक 9 मैक्स होते हैं। हाँ मुझे लगा कि Another journey begins. Still waters of oblivion. टोटल काउंट 9 है, उससे ऊपर नहीं जा सकता है ना। commencing support. अच्छा इस पे बर्न रेजिस्टेंस है, इस पे बर्न नहीं अप्लाई होता है। अरे यार बेकार मॉब है ये, इस पे बर्न नहीं अप्लाई होता भाई। ये यूनिवर्सल ट्रेंड एलसी काम नहीं करेगी इस मॉब के अगेंस्ट। बाय द वे अगर इस मॉब से फाइट कर रहे हो, यूनिवर्सल ट्रेंड एलसी ग्वेनेफेन इसके अगेंस्ट गार्बेज है, क्योंकि इस पे फायर रेजिस्टेंस और बर्न रेजिस्टेंस है। तो तुम्हें डीबफ ही नहीं मिलेगा, इस पे तुम्हें डीबफ ही नहीं मिलेगा। और 7 स्टैक ले रखे हैं उसने, देख लो। अरे अरे I weep for the departed. It too shall fall. Lance ablaze. अगर कोई टीम में 3 साइकिल कर रही है तो पॉग है। 3 साइकिल कहाँ कर पाएगी? 4-5 साइकिल लगी कम से कम। विजय पार्ट फोकस है। On my command. Take cover. Again. Forget your wallet? enemy data secure. Net markers activated. Time for a good old counterattack. I'm on guard. आया ट्रक वाला हिट। ओ मर गई, अकरान बच गई। व्हाट द हेक? पीसी सर्वाइव्ड, डोंट नो हाउ बट ही सर्वाइव्ड दो। I weep for the departed. It too shall fall. Still waters of oblivion. Turn out your pockets. Enemy targets detected. Ready for another? Lance ablaze. Lance forward. अब तो डेड है टीम। बच गया भाई कैसे? अकरान को Drop the ball. Another journey begins. 5 सस्टेन चाहिए। ये नहीं संभाल सकते, इससे नहीं संभाल पाएगा। इससे नहीं संभाल पाएगा। द प्रॉब्लम इज दैट ज्यादा साइकिल लेने पे ये प्रॉब्लम है। अगर आपने आपका हाँ मेरे लगी है प्रोफाइल में। जयपाड़ 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 कोई डिबफ नहीं अप्लाई करता ना।
फ्रीज कर, जपाट बस फ्रीज कर सकता है, फ्रीज डीबफ होता है ना, जपाट से स्किल स्पैम करके फ्रीज कर सकते हो। और अगर तुमने कर दिया उसके लिए भी तुमको इफेक्ट हिट रेट चाहिए होगा फ्रीज लैंड करने के लिए। थ्री 3.6 के डेफ 123 स्पीड, बहुत स्पीड है। 149 इफेक्ट रेट ब्रो, लिटरली इसके लिए 50 EHR चाहिए था, बताओ 50 EHR चाहिए होता और यहाँ पर 40। सीरियसली वाह वाह, आप जरा चपार डालें बॉयकॉट एंड आओ। मैं इसके बाद निकलूंगा, वो रिकॉर्ड एडिट करनी है, सामान वाली वीडियो डालने के लिए सवेरे। Trickier to crack. Time for a buzz. Enemy targets detected. Ready for another? नहीं क्या फ्रीज कैक, आ शिट, फ्रीज निकीज भड़वा। This combat needs optima. This is double speed. इवन नहीं है, इवन होता तो कर लेता। ये मॉब बहुत बेकार है, ये मॉब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पता है इस फाइट में। I'm with you. Trickier to crack. Time for a buzz. Commencing support. In the name of land. अरे सील टूटने देनी चाहिए थी, फिर मारना चाहिए था बट वेल मैंने ट्रेंड एलसी नहीं लगाई, गलती की नहीं, ट्रेंड एलसी लगा लेनी चाहिए थी। फ्रीज नहीं होगा भड़वा। Free will, or whether from still water to the liquid. I weep for the departed. It too shall fall. This combat need. This is double speed. ट्रेंड एलसी पे जब ही तो बोला था। I forget कि ट्रेंड एलसी बिना Acheron के रिजर्वेशन और कैरेक्टर पे ट्रेंड एलसी चाहिए। We need an 5-star LC of this. I'm with you. Stream forth, gleam of old blades. Trickier to crack. Time for a buzz. Enemy targets detected. Ready for another? In the name of land, a will forged in ice never falters. Burn resistance problem. I weep for the departed. और क्रिम्सन नॉट इधर उधर कर दिया रिप। अरे रे 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 छी छी छी, अरे रे छी छी, क्रिम्सन नॉट इधर उधर कर दिया है। एक तो ये ध्यान रखना है कि वो क्रिम्सन नॉट एक टारगेट पर रहेगा तभी ये मैक्सिमाइज कर पाएगी अपना डैमेज। यार एक तो ये मैं उसको ब्रेक करके फ्री डीबफ लेने की कोशिश कर रहा था। ठीक है
मैक्स डैमेज नहीं मिल रहा है। मेरे ऊपर के 2 बिग चैट पढ़ो फायदा है। आपको पता है मैक्स ऑल्ट के बाद 3 डिबफ लगेंगे, लगाने पे एक्रोन 3 प्रिज्मा मिले जो उनके बाद ऑल्ट 3 स्टैक देते हैं। हाँ यस। क्या अब पहला ऑल्ट करो, फर्स्ट ऑल्ट से पहले। कभी फ्रीज नहीं करेगा ये। हिट जब आर्ट This combat, this is double speed. I weep for the departed. It too shall fall. यार एक्टिव पे एक्रोन बोर कर रही है। E2S1 अनलॉक कर दूं क्या अभी? यार समझ नहीं आ रहा वीडियो कैसे डालूं एक्रोन की। पता है एक्रोन की वीडियो क्या हो रही है कि जो भी लेके जा, हाँ जिसमें भी लेके जा रहा हूँ, एक्रोन की वीडियो 2 मिनट 2.5 मिनट की वीडियो बन रही है गेम प्ले की, क्योंकि एक्रोन सबको डिलीट कर दे रही खट खट। क्या बना उसमें, मेरे को तो नहीं समझ आ रहा। लगा बेसिक क्या करो, पहला का ऑल्ट, पहला का अगर एनिमी पे 2 डेप्थ थ्रेड या 3 डेप्थ थ्रेड दिख रहे हैं ना, तो वैसे देख के कर सकते हो। पहला का स्किल हर बार करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने एक बार लगा दिया स्किल करके और सेम ही साइकिल में दोबारा से टर्न आ रही है पहला की, तो तुम्हें फिर स्किल करना है। जैसे अभी लगानी है डेप्थ थ्रेड, अभी मैं करूंगा स्किल तो 2 डीबफ जा रहे हैं जो कि पीड में यूजलेस पड़ जाते हैं। चलो भाई मैं जा रहा हूँ। शॉर्ट ही डाल दो। शॉर्ट्स में क्या डालूंगा, मैं जा रहा हूँ पहले सामान वाले वीडियो करता हूँ, देखता हूँ क्या। एक रन मतलब चैट रन हो जाता हूँ। गुड नाइट। अभी नहीं अनलॉक करूंगा, कर लूंगा 1-2 दिन में कर लूंगा। फिगर आउट करने दो। मैं या तो मैं ये कर सकता हूँ कि एक ही वीडियो में सारे जो 1-2 मिनट के जितने भी है ना टीम कॉम्पोजिशन, सारे कॉम्पोजिशन टीम कॉम्पोजिशन की एक ही वीडियो में डाल दूं। I weep for the departed. It too shall fall. Black Swan feels so much better, so good with her. Memories of beneath the water lies an endless abyss. I see through you. Still waters of oblivion. Ill fate descends. Enemy data net markers activated. Time for a good old counterattack. Mind your manners. Commencing support. Again. Yin and yang. I weep for the departed. It too shall fall. सारे टीम को जाओ तो सारे रकम।
कल एक गोल्डन गियर्स का रन करेंगे pretty much. गोल्डन गियर्स तो ट्राई करेंगे कल. ले बेसिक अटैक कर रहे हैं Acheron पे हम. सत्यानाश हो. अच्छा मैंने लाइट कॉन नहीं लगाई ना. मैं गुड नाइट स्लीप वेल यूज कर रहा हूँ. यस बोले गेट्स विद रुआन में ट्रैक. अरे हाँ मैं तो E2 करके रुआन में ही चलूंगा. E2 Acheron के साथ वही जिंगलू पावर के ब्रेन रॉट होगा. बाकी किस्सा मत करना. आई थिंक ओपी डीपीएस खेल के मिड एवरेज डीपीएस को ज्यादा टट्टी समझ लेते हैं. समझा नहीं मैं. ये टट्टी एलसी पैच. स्टोरी हो गई. यस ऑलरेडी डन विद द स्टोरी. टोना अगर मैं इसको हटाऊं रुआन में डालूं, ठीक है, रुआन में E0 रुआन में E2S1 रुआन में देखते हैं. वैसे एवेंचरिन का बॉस फॉर्म कूल था. हाँ Every petal and all will be swept away by the wind. Ill fate is dead. I weep for the departed. It too shall fall. एक स्टैक. Another journey begins. Destined for oblivion. Grace and elegance. इस पे एक डीबफ लग सकता है पता है. रुआन में का ऑल्ट अप्लाइड है पर इसके ऊपर फ्लावर नहीं है. अगर मैं इस पे को हिट करूं बेसिक अटैक तो इस पे एक डीबफ लगेगा बट एक स्टैक इस पे चला जाएगा. सो नॉट डूइंग दैट. All will be swept away by the wind. Ill tidings manifest. Beneath the waters lies an endless abyss. यार ये फ्यूजन को नहीं हिट करता है बिल्कुल भी. बड़वा I weep for the departed.
What the heck? मैंने अभी नोटिस किया कि अगर मिड ऑल्ट अगर एनिमी मर गया तो जो क्रिम्सन नॉट उस पर रिमेनिंग होता है वो तुरंत जिस पे लो एचपी है रिमेनिंग एचपी है उस पर ट्रांसफर हो जाते हैं तुरंत। ये अच्छी चीज है, ये अभी मैंने नोटिस किया। इंटरेस्टिंग थिंग, वेरी गुड वेरी गुड। इफेक्ट, अरे ब्लैक सॉन पे एलसी ने लगी है, अरे लाल ब्लैक सॉन पे एलसी ने करी लगी है, डीबफ ही नहीं कर रही वो लिल तेनास। इस मॉब पे बर्न रेजिस्टेंस बड़ी अनोइंग है देखो। All things human creations. Every petal, all will be swept away by the wind. Memories beneath the waters lies an endless abyss. A quick divination. Together as one. What do you ill tidings manifest? देखा पहला होती ज्यादा न्यूक करती। अरे मैं बस चेक कर रहा हूँ। अरे इतना ज्यादा ब्रेक, कुछ ज्यादा ही ब्रेक नहीं किया स्किल पे एक्रोन ने। मैं तो रॉन में ही यूज कर रहा हूँ E2S1 पे। चलो भाई, चलो बाय बाय बाय, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। ब्लैक सॉन पे उसकी एलसी लगा दूं, वो भाई वही नहीं कर रही है। अप्लाई बाय बाय।